Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you are staying safe and you're staying healthy. Uh, आज का एनर्जी लेवल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह is completely different, completely very very positive for a change. And I'm really brought up a lot of positivity and a lot of energy. वो कहते हैं ना, जो एक फायर की जरूरत थी, आई थिंक ये कल एक दिल्ली वॉरियर्स ने करके पूरी पूरी कम्युनिटी, द वॉरियर कम्युनिटी को जगा दिया, हिला दिया, जो भी कहें. एंड आई एम सो ग्लैड कि with the family joining in, with people like Colonel RDX, Rochika ji, and many more, and all the amazing Delhi warriors, उन सब के मिलने से इस मूवमेंट को एक अलग ही जान जिसके अंदर फूंक दी गई है. और यस, इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. अभी तो जैसे कल मैं दो तीन बार या बहुत बार ये बोला कि लुक्स लाइक दिस इज ऑलमोस्ट द बिगनिंग ऑफ द एंड. इतना ज्यादा सुशांत के रिलेटेड आजकल फिर से आवाज हो रही है, बातें हो रही हैं. एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग. तो लगता है कि अब तो सीबीआई जो सो रही थी, शायद वो उठ जाएगी. बहुत सारे वॉरियर्स, आई वुड डेफिनेटली नॉट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी नेम. आई विल नॉट बी एबल टू टेक और थैंक एवरी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन. बट अमित वर्मा से लेके, दिनेश से लेके, दीपाली से लेके, रुद्रा, कपिल गंभीर, भारत एंड व्हाट नॉट, रचना जी, इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूं, रवि. आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस. एंड कल इतने लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा. एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, प्रियंका दी, जिन्होंने लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था, उनके ज्वाइन करने से ऑब्वियसली एक एनर्जी लेवल अलग हो जाती है. To top it, we had Meetu Di join as well. So now it is really showing up like the real fight has begun. और अब हमें बहुत जल्दी इसका क्लोजर, हमें एक कंक्लूजन चाहिए. एंड यस, कोलकाता वॉरियर्स भी थे. सारे थे, बहुत सारे लोग. कोलकाता वॉरियर्स, मुंबई से तो वी नो अभी भारत पहुंचा ही था, even though he's from Delhi, but hats off to him. पता नहीं कैसे कर रहा है भाई ये बंदा मैनेज. hats off to him and more power. राजस्थान वॉरियर्स, मैं तो ये भी कहूंगा, अबे भाई आप भी थे. यूएस वॉरियर्स, कैनेडियन वॉरियर्स, एवरीबडी वाज देयर एक तरह से कुछ स्पिरिट में. जिस तरह से कल हमने चीजें देखी, यू नो बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो जो डेफिनेटली वर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल. एंड आई एम श्योर बहुत सारे वॉरियर्स के दिल के बहुत करीब रहेगी ये वाली प्रोटेस्ट मूवमेंट और ये जो कैंडल लाइट विजिल हुआ. बट देयर वर सर्टेन मोमेंट्स, मुझे दिल्ली हिला डाला. बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल. एंड वेलकम एवरीवन एक बार फिर से. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. आप तो बहुत सारे लोग जो जुड़ चुके हैं. कल दिल्ली ने सबको हिला डाला. एक एक मैंने लिखा था, एक ग्रुप में शायद लिखा था, चैट में लिखा था कि आवाज जो है ये गूंजती हुई सैन फ्रांसिस्को यूएस तक पहुंचनी चाहिए. कल एंड ऑफ इट, आई कैन वेरी प्राउडली से ये आवाज सिर्फ सैन फ्रांसिस्को नहीं, पूरी दुनिया के कोनों में गई है. एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. इस टाइम पे मैं देख रहा था, जितने व्हाट्सएप मैसेजेस, डीएम्स, प्राइवेट कॉल्स, बहुत सारी चीजें जो मैं कल से अब तक, कईयों को तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया अभी तक. सो सबको एक बार फिर से थैंक यू सो मच. वी आर ऑल डूइंग व्हाट वी कैन. बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोगों का मेहनत, खून पसीना. कुछ लोग कल बहुत ज्यादा, मैं आई एम प्रीटी श्योर दे वुड हैव लॉस्ट देयर वॉइस आल्सो. मैं देख रहा था अमित वर्मा, जिस तरह से उन्होंने सीबीआई सो रहा है वो किया, दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी एच्ड इन एवरीबॉडीज माइंड. जिस तरह से रुद्रभा अपना क्यूआर कोड वो लगा के और वो वहां पर हर किसी के आगे दहाड़ रहा था, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग. And of course, Dinesh and the entire group, जिस तरह से ये लोग प्लान करते हैं, जिस तरह से सबका ध्यान रखते हैं करके, they wanted to make sure it is a very successful protest.
hats off to them. And एक और moment जो था, when Colonel, imagine Colonel RDX Rohit Dev, he came specially for this movement, for this protest, all the way from Jaipur. And हालांकि जंतर मंतर से लोकेशन चेंज हुआ, he did not lose that kind of the will kahe ya hope kahe ki I will be there. He kept on finding the location. He found the location, and on top of that, StreamYard bhi join karke he kept on showing us also then, and wanted to be like one of the warriors. मजाक मजाक में, on a lighter note, he told me कि वरुण, जो मैंने जिस तरह के मैं कपड़ों में आया हूँ, ऐसा लगता है कि I am one of these young fellows. He is definitely very young. I'm not saying कि age wise he's old, but he really made it so different for all of us. And I'm so proud that रुचिका जी एक मैसेज किया था और उन्होंने कहा था yes I'll be there, और वहां पहुंच के she messaged कि वरुण, I am here. हर कोई अपने लिए अपनी एक प्रेजेंस वहां मार्क करने आया था फॉर सुशांत. दे वांटेड टू से समथिंग फॉर सुशांत, और सबको सुन के आई थिंक इट वाज रियली रियली वेरी स्पेशल. एंड आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत सारे वहां मोमेंट्स रहेंगे. मैं कुछ यहाँ पर चीजें आई रियली वांट टू हाईलाइट. जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी थी वहां पर हुई जो बहुत स्पेशल हम सबके लिए. सो लेट मी जस्ट start off with this. This particular message, I am still yet to kind of cut the clips. I will definitely do it, either tonight or tomorrow. But there were certain highlights from that particular event. I'm gonna just play it for you. And एक बार फिर से वो लोग जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे ऐसे सारियों को, मतलब जो अभी आज जो मोमेंट है, आज के मोमेंट के बारे में? I just want to say, let's keep the momentum going. And as I said earlier also in my tweet, we have to up the ante. And in the backdrop of what has come out from the mouth of our Union Minister, Rane ji, I think it should be taken to logical conclusions, which means that CBI should, take his statement and seek his cooperation in solving this case as he was suggesting. So I've come here only to reiterate this again, that it's high time and we want justice. आप जब भी आती हैं तो हमें सच में मोटिवेशन मिलता है. सभी एसएसआरियंस अपना वक्त निकाल के हैं, आप भी अपना वक्त निकाल के हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन सभी एसएसआरियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? कहे दिल से अदा करना चाहती हूं. कभी सोचा भी नहीं था इतने सारे लोग आएंगे, हमारे शामिल होंगे, हमारी फाइट आगे मजबूती देंगे और इतने आगे तक ले जाएंगे. तो I thank God, I thank Tushar, thank every SSRian on this globe for this huge, awesome support. Thank you so much. Thank you so much. All right, तो ये प्रियंका दी का मैसेज था हम सबके लिए. वैसे ही सबसे बड़ा जो एक सरप्राइज था वो था मीतू दी का वहां जाना, और मीतू दी की वहां प्रेजेंस डेफिनेटली ब्रॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. उनका भी मैसेज मैं जरूर प्ले एक बार करना चाहूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल पिंग मी एंड दे वांटेड टू नो. सो ये टाइमर जो है इनके हिसाब से आई विल मार्क द सेशंस एज वेल लेटर टुनाइट. बट हियर इज दैट मैसेज फ्रॉम मीतू दी. Hello, Didi. How are you? नमस्ते. Thank you, Varun. Thank you so much for. आपने जितना भी किया है हम लोगों के लिए, फैमिली, एसएसआर की फैमिली आपके लिए बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से थैंकफुल है. एंड अभी जो भी कुछ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ आई हूँ. लास्ट नाइट व्हेन आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ देम, सारे जो बोल रहे थे, मुझे यही लग रहा था कि लोग अपना वक्त निकाल के, अपना कीमती, किसी के पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, वो अपना दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब चीज छोड़ के. तो मैं क्या बोलूं, स्पीचलेस. एंड आई एम रियली 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 कहते हैं ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द कोर. बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबका. हम हमारी सबकी तरफ से वर्चुअल हग आपको, प्रियंका दी को. हमेशा याद रखना, एक सुशांत यस हमारे बीच से चला गया, बट बहुत सारे सुशांत छोड़ गए, बहुत सारे. And we will be there for you till the very end, till our life.
ये हमारा कमिटमेंट है आप सबको. So we are always going to be there. And yes, it's a very emotional moment. I can very well understand. But हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. We will get justice for our brother. अब तो ये हमारे साथ रहता है, you know, हमारे घरों में रहता है, हमारे साथ. ये आपका भाई है, हमारा भाई. Yes. He's always there, always and forever. Please stay strong and please. मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उसको जस्टिस मिले और सच में मिले, ताकि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो लोग वो सोचते हैं कि वो करके इतने आसानी से निकल जाएंगे. Not at all. It's not like that. They should get what they did. Absolutely. Stay strong, Didi. Stay strong. We are with you. Thank you, Didi. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं किसी से भी इस तरह से भाई को इस हाल में इस तरह से मैं देख पाऊंगी. ये डोंट नो कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ आने के लिए. हम सब साथ हैं. I really wanted to know each and everyone, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोशल मीडिया पे तो मैं देख रही हूँ सब चीज. मेरे पास everything I am having I'm tapping on every news. But मैं साथ में एक मिलना चाहती थी सबसे एक बार, पर रूबरू होना चाहती थी इसीलिए मैंने इतना. Thank you. मुझे स्क्रीन पे देखा, मुझे लग रहा है सुशांत बोल रहा है. हाँ, बिल्कुल. सुशांत दिख रहा है इस टाइम पे. थैंक यू सो मच. Thank you, दी. बहुत ज्यादा सब Absolutely. चाहे लुक्स कहें, चाहे देखने में कहें, चाहे बातों में कहें, you know, it really felt for a moment हम सबको कि it was just, you know, सुशांत जो हमारे साथ एक तरह से कनेक्ट हुआ. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, you know, मीतू दी का बोलना, मीतू दी का हमारे साथ शेयर करना ये बातें, और यू नो वॉरियर्स का वहाँ जो दहाड़ना, वो तो ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, देखा होगा. बहुत वीडियोस क्लिप्स लोगों ने बहुत काट के डाली हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. यू नो दैट्स हाउ वी शुड ऑल डू. जितना भी होता है आप इन चीज़ों को और स्प्रेड करें. ये एक और मोमेंट था जो मेरे लिए, यू नो, इट वाज रियली रियली वेरी स्पेशल. जिस तरह से रुद्रा ने ये QR कोड बना के वहाँ पर अपने ऊपर बांध के किया. You know, let's hear him, and उसके बाद इसके बारे में जरूर मैं बात करूंगा. बनाया हुआ है तो अब से CBI ऐप तो जवाब नहीं दे रही. ये QR कोड देख लो. हर वॉरियर, हर इंसान एविडेंस सीने पे ऐसे पहन के घूमेगा. जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करोगे फोन से, आपके फोन में सारे एविडेंस पॉपअप हो जाएंगे. आप देख करोगे यहाँ पे मेरे यहाँ पे QR कोड है. जैसे कोई भी इसको स्कैन करेगा तो जो भी एविडेंसेस है वो मोबाइल फोन में पॉपअप हो जाएंगे. अब भारत का, पूरे दुनिया का हर इंसान अपने छाते पे एविडेंस को लेके घूमेगा. आप नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे. Justice for Justice for दीपाली जी ने अभी इसे स्कैन किया और देखिए क्या रिजल्ट आया. ऊपर वाला कौन है? कपिल उनको माइक पकड़ा है. तो अब एविडेंस छुपा नहीं छुपेगा, लिख के रख लो. और एक चीज में ऐड करना, ये तो एविडेंस है जो इंडिकेट कर रहे हैं क्लियर किया मर्डर केस है. अब मैं गोली आपकी तरफ देखता हूँ. अगर ये जो सुसाइड जो 15 मिनट में डिक्लेयर कर दिया गया, सच में अगर ये सुसाइड होता, तो क्या इतने वक्त में आप लोग साबित नहीं कर पाते थे? अगर कोई सुसाइड सच में सुसाइड है तो वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप साबित कर देते. आपका साबित क्या कर पाना अपने आप में ये इस बात का प्रूफ है कि बिल्कुल. तो जैसे कि आपने ये देखा, यू नो, जिस तरह से ये लोग कर रहे थे, जिस तरह से ये बातें हुई, इट वाज रियली रियली वेरी वेरी, ये कहते हैं ना, एक एनर्जी अलग ही लेके आया. और भी वहां पर थे, यू नो, कर्नल भी थे. हमारे साथ है, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं अराउंड द वर्ल्ड. क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? वरुण, एक तो थोड़ा सा ये तो लगे
फेस हो रहा है, और चाहे कि कुछ भी रीजन रहे हो, चाहे कोरोना का रहा हो या काफी दिनों बाद हो रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए छोड़ते हैं। लेकिन ओके, बेसिकली रुचिका जी वहां पर इसी तरह से बात कर रही थी. लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर अ सेकेंड, और मैं यहाँ पर बाद में दोबारा शेयर जरूर करूंगा. कर्नल बहुत अच्छी बातें वहां करके गए, बहुत हमें सबको मोटिवेट करके गए. रुचिका ऑफ कोर्स हमेशा इसी तरह से सुशांत के लिए आती रही हैं, फाइट करती रही हैं. लिंक भी डालूंगा, आई विल पुट द लिंक गाइस. बट एक और जो चीज, अगर आपने सुना अभी प्रियंका का, जब प्रियंका दी का मैंने प्ले किया था, प्रियंका दी ने एक चीज बोली, सीबीआई शुड either get the information from नारायण राणे, या मुझे जो एक चीज खुद पर्सनल लेवल पे समझ नहीं आती है वो ये है कि अगर किसी के पास एविडेंसेस हैं, एंड यू हैव बीन और यू आर अ मिनिस्टर, जिनके पास कैपेसिटी भी है, पावर भी है, एक्सेस भी है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग द मिनिस्टर फ्रॉम रीचिंग आउट टू द सीबीआई? व्हाई डज द मिनिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ नारायण राणे की, के वो क्यों नहीं सीबीआई के पास खुद जाते? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिस्टम क्या है? मुझे अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खेलते हैं, वो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, इट रियली डजंट मैटर. सो पहले तो मैं ये एक डिस्क्लेमर भी पहले दे दूं, क्योंकि मुझे बहुत लोग डीएम और मुझे बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी, आई डोंट नो उसको क्या बोलूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं. चलो लेट मी पुट इट दिस वे, दैट व्हाट नारायण राणे इज डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट. मैं कहता हूँ वह तो बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, पर क्या ये इन्होंने पहले नहीं किया? क्या ये अगस्त ऑफ 2020 में तब से ये नहीं कर रहे? क्या चल रहा है ये? मैं अभी आपके सामने एक आर्टिकल रखता हूं. एक्चुअली व्हाट, लेट मी प्ले अ वीडियो फर्स्ट, एंड आई विल प्ले द वीडियो. उसके बाद हम बात करेंगे नारायण राणे की. ओके, here we go. Let me share. इस वीडियो को सुनते हैं पहले. Investigation, it's become a free-for-all slugfest between Maharashtra and Bihar. And the latest Neta to walk into the ring is BJP leader Narayan Rane, who's made his own set of sensational claims about the Sushant Singh Rajput death case. Narayan Rane has raised questions once again about Riya Chakravarti, the girlfriend, and asks why she's gone missing. Narayan Rane claims that Sushant's ex-manager Disha Salian, who died 6 days before Sushant, was raped and killed, and that she did not die by suicide. These are words of Narayan Rane, a BJP leader. He also asks for actors Suraj Pancholi and Dino Moria to be questioned. Narayan Rane alleges many ministers would visit Dino Moria's house, lived a short distance away from Sushant's home. I want to very emphatically clarify that these are allegations and statements being made by BJP leader Narayan Rane and not by India Today. We are only reporting what the political leader has said in this developing story. Listen in. रिया चक्रवर्ती ही सुशांतची मैत्रीण, त्याच्याबरोबर राहायची. 9 तारीखला ती तिथून सोडून गेली. फोनही बंद केला, बँक अकाउंटही बंद केले. असे एक प्रमुख या सुशांतच्या केसमध्ये व्यक्ती आज 3-4 दिवस गायब झाली आहे, पोलिसांना माहित नाही. टावरवरून, मोबाईल टावरवरून तिचं लोकेशन आणि हे सगळे जे आले होते, सुशांतचा मागील काही दिवस, 20 दिवस ज्या धमक्या येत होत्या, कोणाच्या होते, कोणाचे फोन होते, हे काय मुंबई पोलिसांना माहित नाही, अज्ञान असेल असं मला नाही वाटत.
हिची आत्महत्या झाली. 8 तारीखला तिने आत्महत्या केली. तिच्या राहत्या बिल्डिंग वर उडी मारली वगैरे बातम्या आल्या. भगवती हॉस्पिटलमध्ये नेलं तिला. तिचं पोस्टमॉर्टम 11 तारीखला केलं. 8ला तिने उडी मारली असं म्हणतात आणि 11ला पोस्टमॉर्टम. मला सांगायचं आहे, पोलिसांनी या आत्महत्येबद्दल अधिकची माहिती का केली नाही? कारण ती सुशांत बरोबर राहत होती. तिच्या पार्टीला जे लोक आले गेलो ते 8 तारीखला, त्यांचा किती जणांच्याशी संबंध आहे? मला जी माहिती मिळाली आहे की तिचं जे पोस्टमॉर्टम झालं, त्या पोस्टमॉर्टम मध्ये पाहिलं तर तिने आत्महत्या केलेली नाहीये, तिची पण हत्या आहे. तिच्यावर बलात्कार करून तिला मारलेला आहे. तिच्या वजायनल भागावर जखमा आहे. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this. ओके, इस वीडियो के हिसाब से बिल्कुल क्लियर नारायण राणे ने अगस्त 4 का ये वीडियो है, विच मीन्स के अगस्त 3 या 2 को नारायण राणे ने ये एक कॉन्फ्रेंस या जो भी इसको कहें इसमें करके ये सब इंफॉर्मेशन शेयर की और तब से ये कह रहे हैं. तो इसको ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अगस्त में आने वाला है, फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, अनदर 6 months, इट विल बी 2 years सिंस दिस इंटरव्यू, या ये जो भी इसको आप बोले. तब से ये यही स्टेटमेंट्स, यही बातें कर रहे हैं. आई फेल टू अंडरस्टैंड एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या कहें. I know I'll be trolled. I know they will make a mockery of this, which is absolutely fine. But मुझे तो सिंपल सा एक लॉजिक कोई समझा दे कि अगर आपको ये 1.5 साल पहले से ही पता है, उस दिन ही आपको बता दिया आपने सबको कि शी वॉज मर्डर्ड, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड. दिशा सालियन के लिए बोल रहे हैं, रोहन राय के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि रोहन राय को क्वेश्चन करना चाहिए. ये सारे एविडेंसेस पब्लिक में आने की जगह ये सीबीआई के पास आपने क्यों नहीं दिए? पहली बात. दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं सीबीआई से क्वेश्चन करूंगा, जब ये इंसान ने इतना ओपनली सारी डिटेल शेयर करी हैं, तो व्हाई हैज सीबीआई नॉट टेकन हिम इनटू एनी काइंड ऑफ इंटेरोगेशन एज येट? एक चीज और मैं दिखाऊंगा, और मैं देख रहा हूं रुद्रा इज ऑल्सो हियर, सो आई विल लेट हिम ऑल्सो टॉक एंड स्पीक. बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल. ये था February 22 का है वैसे तो, अपडेटेड, जहां पर एक लाइन मुझे थोड़ी सी खटक गई अनफॉर्चुनेटली. एंड यू कैन हेट मी फॉर दिस, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट इट इज. यहां ये लिख रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज टैलेंट मैनेजर वर मर्डर्ड बाय द सेम सेट ऑफ पीपल एंड द टू इंसिडेंट्स आर लिंक्ड. दिस इज व्हाट द यूनियन मिनिस्टर Narayan Rane has alleged. Perfect. Senior BJP leader Rane said he was ready and would provide any information to the CBI from the CBI requires from him. So, is he waiting for the CBI to send him a formal invitation? या क्या चाहते हैं? If you have information, why are you not able to submit it yourself? चलो वो भी मान लेते हैं कि आप CBI की वेट कर रहे हैं. तो मुझे अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली CBI क्यों नहीं आ रहा? But then काफी लोगों ने वहां पर कहा कि हमने तो सुना है कि दिशा सालियन का केस बंद हो चुका है, ये हो चुका है, फाइल्स हमने तो यहां तक सुनी कि फाइल्स तक डिलीट हो चुकी हैं. सो देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिशा सालियन केस, स्पेशली व्हेन द फैमिली themselves have said कि दिशा सालियन का जो केस है वो दैट इज नॉट अ मर्डर, देयर इज नो रेप, देयर इज नथिंग. फैमिली जो भी बोल रही है उसके बावजूद वो उसका जवाब देते हैं, अ मर्डर प्रोब नेवर गेट्स क्लोज्ड, इट कैन बी ओपन्ड एनी टाइम. सो अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो और आपके पास एविडेंसेस हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट? आई एम कमिंग टू दैट एबी, आई एम कमिंग टू दैट. अभी इसी के अंदर इनकी खुद की एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. अब पहले इनके पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आई एम सेइंग इट अगेन.
Disha Salian was raped and murdered on June 8, 2020. When Sushant Singh Rajput came to know about it, the actor said, I'm not going to leave them. But they came on June 13, 2020 night and strangulated Sushant Singh Rajput, he said. आगे लिखते हैं, Rane pointed out the postmortem report of Disha was not in the public domain, but he was aware of the details. So इनको सारी details भी पता है around Disha Salian. This is the statement that made me a little awkward about the whole. इसको मैं इसलिए ड्रामा यूज करता हूं वर्ड यहां पर बिकॉज मेरे को ये सब ड्रामा अब लगता है एंड इसी वजह से मैं ड्रामा इसको बोलूंगा. He himself says, and I quote, कहां गई, हाँ, okay, when the government changes, these staff and doctors will speak out, he said, adding that many CCTV footage vis-a-vis the two incidents are missing. Where is Rohan Roy? So basically he is suggesting कि जब गवर्नमेंट बदलेगी तब ये लोग बोलेंगे. तो is it what you are stating कि ये भी एक और गिमिक है, ये भी एक और इलेक्शंस के लिए, वोटिंग के लिए, चेंज करने के लिए, या लोगों को डराने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि मैं बहुत सारे अब लोग देख रहा हूं, दे आर वेटिंग एंड दे वांट टू जॉइन. सो लेट मी जस्ट हेयर आउट people, and these are the things which I really want to definitely talk about. Hello Rudra, Abhibhai, Ayush, Vikram, and तेजपुर जोगा जी. ओह अच्छा, आप तो किया है. ओके, प्लीज गो अहेड रुद्रा, आपसे शुरू करते हैं. जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया. और सॉरी, थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है तो आवाज में भी थोड़ा लो आएगा. आई एम श्योर. या पहले आते हैं उस टॉपिक पे, क्या नाम है, जो आपने दिखाया. तो इसमें कुछ हम एनालाइज करते चीजों को. नंबर 1 कि एक चीज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. सिंस द वेरी बिगनिंग राणे जी का जो स्टेटमेंट कह लो या स्टैंड कह लो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. ठीक है, नंबर 1. बहुत से लोग आए, बहुत पॉलिटिशियन आए और वो आके यूटर्न्स भी लिए, बट ही इज द पर्सन जो अभी तक यूटर्न नहीं लिया है फॉर द टाइम, मतलब एज ऑफ नाउ. अच्छा, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट कि हमारी 5 उंगलियां ऐसी तरीके से घी में है, इसको ऐसे समझते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्टिस की जस्टिस कैसे मिलना तय है इस सारी चीजों को लेके. जस्ट अ मिनट. कि सबसे पहली चीज, अगर आप थोड़ा सा कुछ महीने पहले का आर्टिकल पढ़ो जिसमें इन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ था, कि he said that he submitted the names and the things to CBI. Let me repeat. He clearly said in this conference रुद्रा, that he आवाज कट रही है. submitted. आवाज मैं दोबारा लेट करता हूँ क्या? Okay, while we wait for him, Abhibhai, please go ahead. नमस्ते. मेरा 2 ही पॉइंट है इस पर. इन्होंने बोला कि दिशा के किलर्स ने दिशा को मार करके, जब उनको मालूम पड़ा कि सुशांत को पता चल गया है इस बारे में, तो वो रात को गए वहां पर और उन्होंने सुशांत का मर्डर किया. अब क्लियर पॉइंट मेरा ये है, दिशा का मर्डर हुआ 8 तारीख को, सुशांत का मर्डर हुआ 14 तारीख को, और इस बीच उसके किलर्स कछुए पर जा रहे थे क्या, जो उनको वहां पर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लग गया. और ये बोल रहे हैं कि वो गाड़ी में गए थे सुशांत को मारने के लिए. तो ये चीज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है. अब जब वो 8 तारीख को ही सुशांत को मारने के लिए निकल गए थे, तो 14 तारीख को ये चीज कैसे हुई? ये तो करीब 8-9 तारीख के आसपास ही हो जाना चाहिए. और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है, सरकार बदलेगी तब ये लोग बोलेंगे. इसका अर्थ है कि भाई आप बीजेपी के लिए वोट करिए इनडायरेक्टली. अब लोग इसको किस तरह से लेंगे मुझे मालूम नहीं है, पर उसने साफ साफ पॉइंट आउट किया हुआ है कि आप बीजेपी के लिए वोट करिए महाराष्ट्र में. गवर्नमेंट चेंज, एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट जो मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपके पास अगर एविडेंसेस हैं, आपके पास इतने क्लियर एविडेंसेस हैं उन लीडर्स, उन मिनिस्टर्स के लिए, तो आप तो बल्कि सबमिट करो, गवर्नमेंट तो अपने आप गिर जाएगी बॉस.
मैं तो ये कि कह रहा हूँ, राइट, द मोमेंट आप इसी इसको सबमिट करेंगे एजेंसीज को एंड दे टेक एक्शन अगेंस्ट इट, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल आ जाएगा यार, मेरे हिसाब से तो आप वरुण कर भाई, लो। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ मेरी आवाज आ रही है अभी? यस यस हाँ, यस मैं यस उसको फटाफट उसको बता देता हूँ पॉइंट को। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और अभय भाई आपका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ इस चीज को। नंबर वन, कि उन्होंने बोला हुआ है कि वो सीबीआई को क्या कहते हैं, एविडेंस कह लो और नाम कह लो, दोनों दिए हुए हैं। अच्छा, ये कब का है? 2-3 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बोला हुआ है। लेकिन सीबीआई इसलिए एक्शन नहीं ले रही, जब वो लोगों ने पूछा अगर अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी है सीबीआई को तो क्यों एक्शन नहीं ले रही, बोले क्योंकि उसमें एक बड़े मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, दैट्स अ रीजन, और बड़ा मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो इसलिए दैट्स अ रीजन कि सीबीआई एक्शन नहीं ले रही। इतना बड़ा एलिगेशन 3 महीने पहले लगाया गया, तो मुझे लगा अब तो राणे जी गए, क्योंकि उनके ऊपर केस वेस होगा, जेल में जाएंगे, बट और सीबीआई भी कुछ करेगी। बट क्या होता है, उनके ऊपर कोई एक्शन, कोई केस नहीं होता है। यहाँ पे और सस्पिशन बढ़ जाता है कि मतलब देयर इज समथिंग, कि अगर ये गलत होता जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो अभी तक उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता। नंबर वन। तो यहाँ पे एक एंगल ये निकल के आ रहा है कि अब हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब की बार क्या कहते हैं, अब की बार वो कहते हैं कि मेरे पास ये चीजें हैं। तो एक बार उन्होंने नाम दे दिया है, और उन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि क्योंकि बड़ा मिनिस्टर और बड़ा मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, इसीलिए सीबीआई एक्शन नहीं ले रही, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। और फिर से जब अब की बार बोले, तो उन्होंने बोला ठीक है, सीबीआई अगर मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। तो उन्होंने एक बार तो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, दूसरे बार ही सेइंग कि ही इज विलिंग टू इवन असिस्ट सीबीआई विथ रिगार्ड्स टू द एविडेंस एंड एवरीथिंग, प्रोवाइडेड अगर सीबीआई उस चीज उनको बुलाए। तो ये दो चीजें तो हैं कि उनके तरफ से हुई है। अब यहाँ पे कैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे फेवर में है ये चीज, मतलब हमारे फेवर बोले तो जस्टिस के फेवर में, कि नंबर वन, कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके में गिमिक्स में हमें ये करना है, हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि पहले हमें जस्टिस दो, वोट तो हम फिर अपने आप आपको देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ये क्लेम करे, टॉल क्लेम, कि जैसे 10 तारीख को सरकार गिरेगी, जो भी आएगी तो डॉक्टर बोलेंगे, एक्चुअली दे आर प्लॉट, एक तरीके से प्लॉट बना रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए होगा, राइट। अब चक्कर क्या है, इतना बड़ा टॉल क्लेम ये इसलिए भी नहीं कर सकते कि हम हमारी नजरें इनके ऊपर है। अगर ये डॉक्टर आके नहीं बोल रहे हैं, साफ साफ पर्दाफाश हो जाएगा कि इट्स लाइक, कहते हैं ना, कहावत है हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये लोग आपस में अंदर ही अंदर सेटिंग करके बैठे हुए हैं, और हम बेवकूफ बन रहे हैं। तो फिर 2024 में इनकी गंदी वाली या तो हार होगी या तो गठबंधन बनेगी, मेजोरिटी में तो हम लोग एटलीस्ट इंश्योर करेंगे कि ना आए, इन्हें सबक मिले कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए। बट अगर ये बात जो कह रहे हैं वो सही है, तो क्या कहते हैं, फिर तो अच्छी बात है भाई, जस्टिस मिलेगी तो हम क्यों नहीं वोट देंगे। हम तो चाहते हैं, हम वोट किस लिए देते हैं इनको, कि भाई हम एक सेफ और अच्छे एनवायरनमेंट में जिए। जहां तक बात थी आपकी अभय भाई, तो इट्स लाइक मेरा भी ये एनालिसिस है कि हो सकता है जब उन्होंने, सुशांत सर ने बोला होगा भावनाओं में आके कि आई विल एक्सपोज एवरीथिंग, तो उन्हें पहले धमकाया गया होगा, पहले उन्हें, ये पॉसिबिलिटी है, मारा गया होगा, धमकाया गया होगा, और जब वो जिद पे अड़े रहे, उस पे भी नहीं माने, तो फिर यह एक्सट्रीम स्टेप लिया गया होगा कि उनको मर्डर कर दो। और उनका मर्डर तो पहली बार 14 को हुआ नहीं है, हुआ है 13 तारीख को। यह मेरा स्ट्रॉन्ग टेक है। तो आई रेस्ट माय केस हियर करेक्ट। फॉर द तो टाइम। रुद्रा, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं और बात करता हूँ। इट्स नॉट दैट कि मेरे को कोई पर्सनल यहाँ पर किसी से कोई ग्रज है या पर्सनल कोई, एब्सोल्युटली देयर आर वैलिड पॉइंट्स। हम तो सिंपल चीज चाहते हैं यार, वी रियली वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। अगर किसी के पास भी एविडेंसेस हैं, मैं अब इसको ना थोड़ा और जनरलाइज करता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा ये हुआ वो हुआ, लोगों के ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई, और और हमने भी कई इनिशियली हमने बिलीव कर लिया, उसके बाद हमारी आंखें खुलनी शुरू हुई। बट एंड में कुछ हमारे जैसे बीच में से लोग गए, अरेस्ट हुए, और उन्होंने कह दिया कि ये तो जी रिपब्लिक की न्यूज और ये और वो, आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ऐसे बेवड़ों ने ऐसा कुछ बोल बोल के निकल गए कि भाई मैंने तो ये सब न्यूज पब्लिक मीडिया में न्यूज चैनल से सुन के मैंने निकाल दिया था। अब मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे वैलिडेशन क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, और एक चीज मैं करेक्ट भी करूंगा आपको, ये जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने वीडियो दिखाया वो 2020 का है।
अभी जो रिसेंट वाला हुआ उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट्स मारी गई, सेम वही बातें बोली गई। तो कंसिस्टेंसी, यस, अब मैं अगर इसको सच लेके चलूं, यस, मैं सच की तरह मानता हूं कि इसलिए वो कंसिस्टेंट है। पर अगर ये झूठ भी है तो झूठ भी कंसिस्टेंटली ही बोलना पड़ेगा बॉस। ऐसा तो है नहीं कि पहले कुछ बोल दिया और अब कुछ और बोल दिया, तो ऑब्वियसली यू लूज योर क्रेडिबिलिटी। सो अगस्त में जब ये पहली बार ये स्टेटमेंट्स बोली गई, बड़ा क्लियर बोला गया। दिशा के साथ क्या हुआ वो सब क्लियर बोला गया। सुशांत को कैसे मारा गया, नाम लिए गए। उस टाइम पे तो सीधा डायरेक्टली नाम लिए थे। डीनो मौर्य और आदित्य ठाकरे का नाम नरेंद्र इसने राणे ने बोला था। आज की डेट में 2.5 साल बाद फिर से ये रिवाइव कर रहे हैं चीजें। यस, इट इज गुड फॉर ऑल द वॉरियर्स, आई एम श्योर इट इज, इवन द सिस्टर्स। मैं तो ये कहता हूं, चलो सारी बातों की बात, आप सीबीआई के पास भी नहीं, डिड दे एवर ट्राई टू रीच द सिस्टर्स और द फैमिली, और फैमिली को वो कंफर्ट देके बताया कि व्हाट, हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, हम आपको देते हैं या आप आगे लेके जाओ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डू दे एक्सपेक्ट एवरीबडी एल्स टू रीच आउट टू देम? यार ये तो वो बात हो गई रुद्रा, एंड यू आर अ आइडियल एग्जांपल एक्चुअली। आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर ऑन द स्क्रीन। कितनी सारी चीजें हम पब्लिक डोमेन में आपने भी देखी हैं, कुछ आपने चीजें खुद जाके भी सबमिट करी हैं। आपको कभी बुलाया सीबीआई ने, या आपको किसी एजेंसी ने आपको पर्सनली इनवाइट किया कि आप रुद्रा, आप प्लीज हमारे पास आए क्योंकि आपके पास कोई एविडेंसेस हैं? गाइस, अगर आपके पास, मेरे पास कोई भी चीज आती है, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 2020 की बात है, जब कुछ चीजें मेरे को किसी ने कहीं से ट्रांसफर की थी, सबसे पहली बात और सबसे अपने आप को सेव करने का जो होता है वो ये होता है, यू जस्ट पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल, टू द राइट एजेंसीज। यू डोंट वांट टू कीप एनीथिंग टू योरसेल्फ। और बार बार ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये मिस्टर, ये जो क्या है, कबाड़ी वाला जो बैठ करता रहता है, क्या चल रहा था ये? अगर उसके पास सब कुछ जेन्युइन था तो जाओ यार, केस करो, एक्सपोज द पीपल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आप सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हो किसी के ऊपर, एंड जो भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली ही इज डूइंग द राइट थिंग, ही शुड एक्सपोज सच पीपल। बट अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, यार, आप, मैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारे यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड, कल आपने सिस्टर प्रियंका को भी सुना था, उन्होंने भी बोला कि सीबीआई शुड डेफिनेटली गेट इट। सीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उतनी है तो आपकी खुद की क्यों नहीं है? वो बंदा जो बोल रहा है कि मेरे पास एविडेंसेस है, आप सबमिट क्यों नहीं करते? एक ईमेल में आप तो चलो, पॉलिटिकल पावर भी आपके पास तो सीधा एक्सेस होगा। मेरे जैसे बंदे के पास एक ईमेल की पावर थी कि ईमेल में मैं अटैच करके एंड आई विल सेंड ऑल ऑफ इट टू द एजेंसीज। तो आप, मेरे ख्याल से रुद्रा, यू हैव गॉन देयर ऑन योर ओन फीट टू सबमिट थिंग्स। व्हाट इज स्टॉपिंग दिस गाय? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नहीं नहीं अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग टेक है कि जैसे मैं और आप तो कॉमन सिटीजन हो गए, कॉमन इंसान हो गए एक तरीके से। तो हम तो अब बहुत अंदर तक जाके वो चीज करके आए हैं, तो इट्स लाइक मुझे लगता है द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग एनीथिंग विच इज पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं। और मैं बता दूं यहाँ पे लाइव में अपने बलबूते पे, मतलब अपने उस पे, कि केस में सब कुछ पहले ही सब कुछ हो चुका है। इट्स लाइक कि कौन किसने क्या किया है सबको पता है, वो चीज हो चुकी है। इट इज जस्ट द पॉलिटिक्स, लेट मी टेल यू, which is stopping from 302 or any action from CBI and agency. That's my firm belief. तो तो क्या है कि इतने बड़े मिनिस्टर, पहली बात देखो आपकी, वो कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं, इतने बड़े मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऑफ कोर्स वो उसमें होंगे, नजर में होंगे, दैट गोज विदाउट सेइंग। अगर वो 1% भी झूठ कह रहे हैं ना, या पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं, सबको पता है 2024 के इलेक्शन में बैक फायर करेगा, और करना भी चाहिए। मैं, मतलब मेरे मन में दोनों चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि बैकफायर ना करें, इस वजह से कि भैया इनकी बात सच निकले, जल्दी से जस्टिस हो जाए, सभी का इसमें भला है। बट उनको भी ये बात पता है कि अगर एक भी इधर उधर हुआ तो दैट इज गोइंग टू बैकफायर देम, क्योंकि पब्लिक प्रेशर से बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। हम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, हमारे वोट के बिना दे आर नथिंग। आई एग्री। आई लव टू हियर बाकियों का भी पर्सपेक्टिव। एंड एक मेरा मेरा एक डाउट है रुद्रा हाँ भाई, जी, आप अगर उसको कर सके क्लियर, तो इन्होंने अपने पुराने पीसी में आदित्य ठाकरे, रेणु मौर्य, इनका नाम लिया हुआ है। अभी हाल ही के पीसी में इन्होंने ये चीज बोली कि अभी जो कल्प्रिट्स हैं उनके नाम बाहर आ जाने दो।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जैसा नहीं लग रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हो कि नाम बाहर आ जाने दो, और जबकि पुराने आपने नाम लिए हुए हैं। तो ये मुझे रखना था एक पॉइंट। एब्सोल्युटली, अबे वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो पिछला वाला जो ऑडियो है, जो मैंने वीडियो भी प्ले किया, और उसी टाइम पे जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, इस there are 3 or 4 names, very clear names taken out by Mr. Rane, जिसके अंदर एक सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, ये सब नाम इन्होंने फर्स्ट टाइम में लिए थे, और आप इमीडिएटली, और आज की डेट में ये सब नाम एकदम से कवर अप होके नामों के बारे में डायरेक्टली बात नहीं हो रही, किसी का बेटा, किसी का ये और वो, इस तरह से कवर अप हो रहा है। सो आई ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड, कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ यार, एंड ऑफ द डे, ना तो किसी के फेवर में, ना किसी के अगेंस्ट में, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद और टू हेल्प सुशांत केस, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट दैट इंडिविजुअल। बट हमने ऐसा बहुत पहले भी किया है, बहुत लोगों के साथ किया है, और हमने बहुत यू टर्न भी देखे हैं, और हमने बहुत चीटर्स भी देखे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर है एविडेंसेस, या तो सीबीआई को आज की डेट में जाना चाहिए एंड शुड गेट द प्रूफ्स एंड टेक लीगल एक्शन। मैं हैरान ये हूं कि मुझे लगता था जो जो 2020 में ये अनाउंसमेंट्स की थी इन्होंने, उसके बेसिस पे वो सबमिट हो चुकी होंगी अब तक। ये रिसेंट मोस्ट इंटरव्यू के बाद जब मुझे फिर से वही पता लगा कि व्हाट, अभी तक नहीं सबमिट हुआ, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड फिर सीबीआई कर क्या रही है। अगर कोई अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, तो सीबीआई क्यों नहीं? सीबीआई का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोटोकॉल है जिस वजह से वो नहीं जा पा रही? आई फेल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, मैंने जितना सीबीआई का अभी तक पढ़ के समझा है और उनसे इंटरेक्ट करके मतलब एक तरीके से फील किया है, ऑन थ्योरी इट इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टाइप का, कि लाइक अपने हिसाब से करती है, हाँ ऑटोनोमस बॉडी है ऑन थ्योरी, बट ऐसा लगता नहीं है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन और चीजें अवेलेबल है जो इंडिकेट करते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर तो आता है और उस हिसाब से इन्फ्लुएंस भी होता है। तो दैट इज लाइक एक तरीके से कहते हैं ना, ऐसा सच जो सबको पता है बट कोई बोलना नहीं चाहता। अब है एक बहुत अच्छा मैंने कमेंट देखा किसी का, वो मातोश्री का था, जस्ट अ मिनट, आप ही के हाँ, लाइव में मैं भी देख रहा वीडियो था, ये मैंने हाईलाइट भी आप किया थोड़ा था। वो हाँ हाईलाइट कर देंगे एक बार फिर से, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था। हाँ ये वाला, तो देखिए अगर इनकी बात तो सच है तो फिर मातोश्री के ऊपर एक्शन होते हुए अभी दिख जाएगा कुछ ही दिनों में, मतलब इवन नॉट दैट 10 मार्च, अगर इनकी बात सच है तो होना चाहिए सामने, क्योंकि ईडी और एनआईए फुल फ्लेज एक्शन में है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इट मीन्स कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं साफ सीधी बात है, ब्लफ है और कुछ नहीं, जस्ट फॉर द पर्सनल गेन्स, और बेवकूफ हम जैसे कॉमन सिटीजन फिर बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने हाईलाइट किया हुआ इधर स्क्रीन पे। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं बाकी को भी सुनना चाहूंगा, वेरी वैलिड पॉइंट्स, एंड थैंक यू अभय एंड रुद्रा, बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आए। यस विक्रम, आप क्या कहना चाहते हैं? आप म्यूट है विक्रम, विक्रम म्यूट है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के सारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही वो लोग कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं धीरे धीरे लोग, काफी मैं खुश हूँ। और रही नारायण राणे की वो इंटरव्यू की बात, तो शायद मेरे अंदाज से बीएमसी चुनाव पास में है। जब जब चुनाव पास में होता है तब तब पे आके इंटरव्यू देके और निकल लेते हैं, बीच में फिर नहीं आते। जैसे बिहार में चुनाव था तो फिर आए थे और अपना वो इंटरव्यू दे के निकल गए थे। बीएमसी चुनाव आने वाला है मार्च या अप्रैल में मुंबई में, उसके लिए आके आए अभी और फिर दिए अपना इंटरव्यू और निकल लिए। जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं, जब सब कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैं सीबीआई के सामने बोल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और लाल बत्ती कोई मंत्री का गाड़ी आया था और सुशांत के घर के ऊपर से मतलब बहुत लोग, सब लोगों ने, बिल्डिंग वाले ने देखे थे कैसा हुआ है, तो सीबीआई फिर क्या कर रही है? मतलब सब कुछ सबूत वो दे रहे हैं तो सीबीआई क्यों बैठा है? पॉइंट एक। और जब बिल्डिंग के लोगों ने देखा कि वो लाल बत्ती का कोई मंत्री का गाड़ी आया था, 4 लोग आए थे घर में घुसे, और सब कुछ वो लाइव आके ही बताए 2-3 दिन पहले, तो सीबीआई कुछ क्यों नहीं कर रही है? और रही बात ये नारायण राणे की, तो ये सीबीआई के सामने जाके बोल दे, ये आते हैं इंटरव्यू देकर निकल लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सब पॉलिटिकल गेम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन होता है तब ये क्यों आते हैं? बीएमसी चुनाव, एक्चुअली विक्रम, आपने बीएमसी एक और चुनाव बहुत इसलिए अच्छा, शायद ये बोल रहे हैं, ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं। राइट, आपने आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला अभी विक्रम, और मैंने अभी साथ ही गूगल कर लिया
एक्चुअली एंड ऑफ मार्च में इलेक्शंस हैं बीएमसी के, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक लेस देन अ मंथ, एक महीना भी नहीं बचा इलेक्शंस को। और हो सकता है, अगेन वी कैन नॉट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी इस टाइम, तो मैं यही कहूंगा कि इलेक्शंस। और एक चीज मैं यहाँ जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा गाइस, ये जो मैंने भी पढ़ा था और मैंने सुना भी था, ये लाल बत्ती वाला, ये जो एक लॉजिक दिया गया था कि लाल बत्ती वाली कार आई थी एंड ऑल दैट। पहली बात, अगर कोई किसी के ऐसे घर जा रहा है, सुशांत के घर कोई जा रहा है, और अगर किसी और इंटेंशन से जा रहा है बॉस, सिंपल सी बात है, वो हाईलाइट होके नहीं जाएगा, वो किसी लाल बत्ती में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अपनी सिक्योरिटी इस तरह तो लेके जाएगा ही नहीं, जबकि सबको ही पता चल जाएगा कि कोई आया है। तो वो तो मैं मान ही नहीं सकता। और दूसरी बात, कुछ लोगों की हमने पूरी मूवमेंट को हमने देखा है। सबसे पहले अगर मैं इसी की बात करूं, अगर हम लेके चले आदित्य ठाकरे, जिसकी लाल बत्ती के बारे में बात हो रही है, आदित्य ठाकरे एक लैंड रोवर में या रेंज रोवर में व्हाइट कलर की घूमता है जब उसको घूमना होता है। अभी रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली, लता मंगेशकर के घर पे भी ये लोग आए थे। उससे पहले ये किसी हॉस्पिटल में किसी को मिलने गए थे, वहां पर भी ये अपनी रेंज रोवर में ही जाते हैं, और दैट इज हिज कार। तो ये कहना कि लाल बत्ती में आए थे, ये तो बेसिकली एक गिव अवे की तरह हो गया कि व्हाट, लाल बत्ती में बैठ के जा रहे हैं किसी को मारने, तो लोग क्या, और चाहे वो रात, और रात को तो वैसे भी लाल बत्ती ज्यादा ही चमकेगी। तो मैं वो तो बिलीव नहीं कर सकता कि इस तरह सॉरी से। भाई, मैं फिर से इंटरजेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। एक्चुअली ये पॉलिटिशियंस भूल जाते हैं कि हम जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं और हमको भी टेक्निकल नॉलेज है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहली चीज, मुंबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो अगर इनकी बात सच है तो ठीक है, चलो सुशांत के घर का सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ होगा ना, रोड का तो सीसीटीवी कैमरा काम करता है, तो उससे ऐसा किसी का माइक ऑन है शायद, तो वो एक और है, हाँ, तो उससे क्या होगा कि लाइक पता चल जाएगा कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। और अगर वो उनकी बात में इतनी सच्चाई है तो सीसीटीवी का छोटा सा ही क्लिप जो है वो पब्लिक डोमेन में रखे, नंबर 1। नंबर 2, सीसीटीवी को भी 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो हो गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और दूसरा है गूगल अर्थ का भी इसमें हेल्प लिया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट भी कैप्चर कर लेती है, ठीक है। और मुझे को तो लगता है जब सीबीआई का ये भी एक आया था कि दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजी, तब जरूर उन्होंने गूगल अर्थ के इन सारे फुटेज का भी लिया होगा, क्योंकि हम जैसे लोग जो कॉमन सिंपल इंजीनियर्स हैं वो गूगल अर्थ के इंजन को यूज करके सारी डेटा निकाल लेते, तो फिर तो वो सीबीआई वगैरह है, और ये तो एक इतने बड़े मिनिस्टर है, तो वो तो पब्लिक डोमेन में अगर इंटेंशन है रखने की और अगर सच कह रहे तो रख सकते हैं। दैट्स द नंबर 1। नंबर 2 कि क्या कह रहा था, लाल बत्ती वाली, देखिए एक बात तो है, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अपना टशन दिखा के आए और हड़काने या मारने। कारण पॉसिबिलिटी क्यों, अभी जैसे मुंबई में हुआ था, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, आपने देखा कैसे पुलिस वाले उठा के ले गए, डिटेन किए, राइट। तो ये तो अपनी एक दबंगई दिखाते, इवन आफ्टर ऑल दिस थिंग, जो अभी अंटिलिया केस में भी इनका एक्सपोज हुआ कि ये क्या, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, क्या है इनकी सच्चाई, तब भी ये लोग इस तरीके से दिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो केस देखे, जो मुंबई का जो उस टाइम पे सिचुएशन था, जो अंबानी के गिरेबान तक हाथ डाल सकता है, ठीक है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सुशांत सिंह राजपूत क्या है, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दादागिरी दिखाने के लिए लाल बत्ती में जा ही सकते होंगे, क्योंकि ये उस टाइम पे हो सकता है टशन में होंगे कि भैया हम ही सर्वे सर्वा हैं, हमसे बड़ा कौन। तो ये एक एंगल है, सॉरी मैंने इंटरजेक्ट किया, बट श्योर श्योर श्योर, नहीं एब्सोल्युटली। मैं सुनना चाहूंगा और भी, नागेंद्र जी भी है, वेलकम, एंड आयुष जी। नागेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप, प्लीज। देखिए सर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो, इतने बड़े केस में हमें अगर जीत चाहिए तो एक बड़ा हाथ भी चाहिए हमें। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि ही इज आवर, वो बोलते हैं ना, हुकुम का इक्का, और हमें अच्छी तरह यूज करना पड़ेगा इनको। बिकॉज देखिए, कोई आवाज नहीं रेस कर रहा है आज के, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीबीआई हो, ऑल आर साइलेंट। द 1% हु इज रेजिंग हिज वॉइस इज नारायण राणे एंड नीतीश राणे। 2% जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है और जो आवाज उठा रहे हैं, वो ये 2 है। चाहे हम मान ले कि वो पॉलिटिकली उठा रहे, कुछ भी उठा रहे, बट मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकली उठा रहे, बिकॉज यू रिमेम्बर द मीटिंग विथ दैट, जो एक फेमस मीटिंग हुई थी एक होटल में, हाँ, राइट। तो वो तो ऑपोजिट स्टैंड ले रहे थे, ओके। और मैंने कई लोगों को उनको सपोर्ट करते हुए देखा, बट
आई एम ए डायर नॉन सपोर्टर ऑफ दैट पर्सन। उससे अच्छे तो कई जगह किरीट सोमैया है। ओके, और एक चीज ध्यान रखिए सर, ये नारायण राणे के घर पे पत्थर भी फेंके गए थे, शिवसेना ने अटैक किया था। हैड ही बीन ए कॉन्स्पिरेटर उनके साथ तो ये नहीं होता। बहुत जबरदस्त उनके घर पे, आपको याद होगा, पथराव किया गया था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े प्रूफ्स और डिस्क्लोजर दे रहे हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल डिस्क्लोजर कि अभी तक हमें जो पता था कि 8 तारीख का वीडियो फुटेज नहीं था, 8 तारीख के वो नहीं थे, रिकॉर्डिंग्स नहीं थे, या 13 तारीख के जो भी है वो नहीं थे। बट ही इज टेलिंग बिफोर दैट एवरीथिंग वाज देयर, ऑन दैट डे से वो गायब हो गए। रिकॉर्ड्स जो है, डायरी एंट्री जो है, वो गायब हो रहे हैं। ही इज लेइंग डाउन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट। और इन्होंने पहले भी एक बात बताया था कि रोहन राय है, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। देखो स्पेसिफिक ही इज थ्रोइंग, बहुत अच्छे प्रूफ डाल रहे हैं। ओके, एंड ही आल्सो सेड, इफ आई रिमेम्बर, ही वेंट टू द सीबीआई ऑफिस। ओके, वो गए थे, उन्होंने प्रूफ दिया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए होंगे, वो गए हैं, जरूर डेफिनेटली गए होंगे। ओके, और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इतना बड़ा एलिगेशंस कोई नहीं लेगा किसी के खिलाफ unless and until he has certain specific proofs from a specific person who is the first hand, जिन्होंने इस इंसिडेंट को क्लोजली देखा होगा, चाहे वो दिशा के मर्डर हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम। एंड आई डाउट it is Disha murder the person saw it. Okay, I don't think the Sushant murder he may not have seen it, बट मुझे ऐसा लगता है ये इंसिडेंट के बारे में उनको जानकारी दिशा मर्डर से है। ओके, एंड दैट पर्सन रिवील्ड इट टू हिम क्लोजली, एंड आई कैन गेस हु दैट पर्सन इज, बट आई विल नॉट गेस एट दिस पॉइंट, बिकॉज आई बिलीव दैट इज ए वाइटल एविडेंस। ओके, वो एक एविडेंस है बहुत बड़ा, और शायद सीबीआई मूव नहीं कर रही है उस तरफ में, उस क्योंकि सीबीआई को भी पता है दैट इज ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट इज ए वाइटल इंफॉर्मेशन, और सीबीआई को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। मुझे ऐसा लगता है, देखो आई एम वेरी मतलब मुझे, आई एम गेसिंग ऑल दिस थिंग, ओके, कि गो स्लो, अदरवाइज 2 साल तक कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड देयर आर बिगर हैंड इनटू दिस, देयर आर बिगर प्लेयर्स इनटू दिस हु इज स्टॉपिंग ऑल दिस थिंग्स। नारायण राणे इज जस्ट अ स्मॉल प्रॉन। ओके, आप देखो देवेंद्र फडणवीस का मीटिंग को याद रखो संजय राउत के साथ, इफ यू रिमेम्बर इट। सो देयर आर बिग प्लेयर्स, और इंडिकेशंस आप वहां से देखो। इनफैक्ट ही इज टेकिंग ऑपोजिट स्टैंड। सो आई थिंक हमें जो भी हो, झूठ भी हो, वी शुड स्टैंड विथ हिम। किरीट सोमैया झूठे भी हो, हमें उनके साथ स्टैंड करना है। बट जिन्होंने गलत किया है, मैंने तो कई लोगों को उनके साथ स्टैंड करते देखा है। When I once raised this Devendra Fadnavis topic, somebody got very angry और बोले कि हमें तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना ही है। He fought with me, and somehow I was taken out of a group because of saying these things. Oh, really? Okay. हाँ, yeah, I remember it. Very nicely I was in a, और उस वक्त से मैं थोड़ा इस मोमेंट से हट गया। मुझे हटा नहीं, बट मुझे समझ में आया कि इसमें कई लोग ऐसे इन्वॉल्व है जो इस वेरी वेल प्लांटेड, ओके, वेरी वेल प्लांटेड, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे फुटबॉल में गेम होता है ना, 1-to-1 वो होता है, जैसे एक अटैकर को डिफेंडर वो करता है। देयर आर पीपल पुट इनटू दिस मोमेंट जो एक एक आदमी को रोकने का काम कर रहे हैं, जो गुड फाइटर्स को रोकने का काम कर रहे हैं। और मैंने अभी जैसे रुद्र को देखा, he goes to the CBI, he submits proof, और रिसेंटली उनका एक आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें so everybody has a role, but I think this person is doing a good job, नारायण राणे जी। और मैं, हाँ, उनको एक सजेशन हम जरूर दे सकते हैं, सर, इफ यू हैव नॉट गॉन टू द CBI ऑफिस, प्लीज सबमिट द प्रूफ। बट मुझे लगता है दिस इज ए पर्सनल, देखो इसमें खतरा है काफी, एंड ही ऑल्सो नोज the person who will give the proof, I am telling you,
may be a first-hand observer of Disha murder. Okay, so अगर वो नाम डिस्क्लोज कर देंगे, और ये सीबीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे बढ़े, बिकॉज व्हेन ही इज लेइंग दिस सो मच प्रूफ ऑन द, तो ये तो सीबीआई का जॉब है कि वो जाके उनको बुलाए, इन्वेस्टिगेट करे, थॉरल, व्हाट प्रूफ यू हैव, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस, ओके, एंड देन ही विल रिवील कि कौन है, बिकॉज नारायण राणे को शायद इतना लाइफ रिस्क नहीं है, बट द प्रूफ ऑन हुज बेसिस इज टॉकिंग हैज अ लाइफ रिस्क, उसको लाइफ उनको सी, एंड दिस इज अ वाइटल एलिमेंट, ही आल्सो नोस, तो वो भी देख रहे हैं कि क्या कर रही है सीबीआई, वेयर इट इज मूविंग, बिकॉज वो अगर रिवील कर देंगे, that person will have a threat. We can assume who he is. Yeah. Even I can guess that. Who that मैं यहाँ person पे or सॉरी फिर से इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। पहले मैं चाहूंगा, एक कमेंट बहुत अच्छा है, उसको प्लीज अगर आप हाईलाइट कर सके, प्रियंका SG का मैंने भी देखा, बहुत अच्छा कमेंट है, जिसमें वो कि बाय दैट एनालॉजी करके एक है, नो 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 नॉट दिस वन, एक है थोड़ा सा पीछे, तेजपुर बाय दिस एनालॉजी, यप। हाँ, अब इसमें मैं बोलना चाहूंगा एक चीज सर, आप, मैं नाम लेके बोलूंगा, और वो एक नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। नाउ मैं एक बार को रानी जी का तो एंगल एकदम हटा ही देता हूँ, ये तो उस मीटिंग में भी थे, तब वो मुंबई में पुलिस में भी थे, और उस मीटिंग में भी थे जिसमें खुद ठाकरे जी थे और सुशांत सिंह के केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी को इन एंड आउट बहुत डिटेल में पता होने की पॉसिबिलिटी है, वो खुद सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, राइट। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जो कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। पहली चीज मतलब कि बॉस्ड अप या फिर वो कॉम्प्रोमाइज होने का ऐसा चांस दिख रहा है कि जब पहले ये नहीं थे डायरेक्टर, तब बहुत सारी अपडेट आ रही थी कि सीबीआई 302 लगाने जा रही है, ठीक है, या जनवरी 2021 तक कुछ आने वाला है अपडेट। हाँ, इवन नुपुर प्रसाद मैम ने स्वामी जी को रिवर्ट भी किया हुआ था, बट जब से ये आए हैं तो दो ही चीजें खाली मीडिया में आई है। एक डायरेक्टली आई है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एंगल्स, वो भी तब जब हमने प्रोटेस्ट किया था 14 जून को सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने, ठीक है, जिसमें डिटेन भी किया गया था पुलिस के द्वारा। फिर दूसरा आता है मीडिया से कि सीबीआई ने कुछ फेसबुक वगैरह से पूछा हुआ है डेटा दो, उसके सिवा कोई भी इस केस में कॉन्क्रीट अपरेंट एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा। अब आते हैं राणे जी के इस चीज पे, ठीक है, मैं आपके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन राणे जी क्योंकि इतने बड़े मिनिस्टर है तो उनको हमसे ज्यादा लॉ के बारे में पता होगा। तो एविडेंस प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में एक एक्ट है, ठीक है, अगर कोई एविडेंस टाइप का होता है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। ये तो हाई प्रोफाइल केस है, आप वो छोड़ दो, सिंपल सा कोई मर्डर हो, हालांकि कोई मर्डर सिंपल नहीं होता, बट सिंपल सा कोई मर्डर हो जो कि पुलिस थाने में कोई केस चल रहा हो, उसमें भी कोई एविडेंस होता है तो उसको भी ऑन थ्योरी प्रोटेक्शन देने का एक्ट है सरकार में। तो राणे जी चाहें तो अपने वकील के द्वारा एक पहले से ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि लेटेस्ट अज्यूम अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ऐसा फर्स्ट हैंड कोई एविडेंस हो सकता होगा, तो उनको प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें करने की नियत हो तो कर सकते हैं। अब बाकी आपने जो पॉइंट्स रखे हैं सर, स्पॉट ऑन। सर मैं एक बात और कहूंगा, देखो विटनेस तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट फिर क्या होगा, इनका प्रोटेक्शन खतरे में आएगा। ओके, सो देयर आर वेरी प्रोज एंड कॉन्स जो इसमें है, बहुत गहराई है, देखो चीजों में बहुत गहराई है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अ हाई प्रोफाइल केस। द प्रॉब्लम इज दैट, रुद्र आपने जो बोला, द प्रॉब्लम इज पॉलिटिक्स ऑफ द थिंग्स, व्हाई दिस केस इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड। से आई वुड हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस केस, मैंने सुशांत कुछ किया होता, आई वुड हैव बीन इन जेल टुडे, और ये केस सॉल्व हो चुका होता, ये केस सॉल्व। द प्रॉब्लम इज द पॉलिटिक्स ऑफ द केस, द हाई प्रोफाइल नेचर ऑफ द केस, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट गेटिंग सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज देयर, नॉट कोई सच बोल रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, एवरी एविडेंस इज टुडे देयर, और इतने सारे प्रूफ्स, एम्बुलेंस हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आई वांट टू डिस्क्लोज। जो एक सो कॉल्ड से सफाई कर्मी था जिन्होंने पूरा ओवरहियर किया था कूपर हॉस्पिटल में, द
discussion between the doctors and all those things. I don't think CBI has called him also. जिन्होंने बोला था कि इनके पाँव में ब्रूशेस थे और डॉक्टर्स को उन्होंने ओवरहर्ड किया था, उसको भी नहीं बुलाया गया था. ओके, दैट इज एन इम्पोर्टेंट एविडेंस. ओके, शायद मुझे नहीं लगता, बिकॉज देखो देयर इज सम एफर्ट टू इग्नोर द इम्पोर्टेंट एविडेंसेस, ऐसा मुझे लगता है. ओके, और देखो और एक बात मैं कहना, अभी सर ने भी बोला था, प्रियंका दीदी ने खुद बोला कि नारायण राणे के स्टेटमेंट को इनको लेना चाहिए, सीबीआई को. Yeah. Why she said she must be privy to some information? Definitely she feels there is something truth in it. Definitely देखो, आप उस पॉइंटर्स को देखो, पॉइंटर्स आप देखोगे तो आपको बहुत चीज मिलेंगे. बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज हाई प्रोफाइल केस, नॉट सो इजी केस. किसी के लिए भी इजी नहीं है. देयर इज अ लाइफ थ्रेट टू एवरीवन, इंक्लूडिंग अस. हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपनली, देयर इज ए थ्रेट टू आवर लाइफ ऑल्सो, आवर सिक्योरिटी ऑल्सो. तो वी आर ऑल्सो नॉट सेफ. तो वो लोग तो पूरे एकदम इस केस के डेप्थ में बात करना पड़ रहा है उनको, लिविंग इन बॉम्बे. सो इट्स नॉट सो इजी. द ऑपोजिशन इज हाईली स्ट्रॉन्ग. तो वो प्रॉब्लम इसमें आपको एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ना कि वो सीबीआई ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता होगा कि इग्नोर कर रही होगी, तो वो इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा, चाहकर भी, अगर उनकी ऐसी इंटेंशन है होगी भी तो, कि हम जैसे वॉरियर्स, इट्स नॉट ओनली मी अलोन, बहुत से दिल्ली वॉरियर्स और अदर वॉरियर्स भी है. तो उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज जो हमें लग रहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं है कि सीबीआई इन्होंने सम्मान किया हुआ, बुलाया हुआ है, पूरा 9 पन्ने का हमने कंपाइलेशन किया था ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का. इनडायरेक्टली एक तरीके से आप टॉन्ट कह लो या जो भी कह लो से करते हुए यह सारी चीजें हैं, और हमें कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली है कि आपने सम्मान किया, ऐसा कुछ किया है. यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसको ऑफिशियली, लेट मी रिपीट, हम सभी ने ऑफिशियली सीबीआई से एक्नॉलेज कैसे करवाया हुआ है, सबमिट किया है, और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ली है कि सीबीआई डायरेक्टर के पास, ऑनरेबल डायरेक्टर के पास वो सारी चीजें गई हैं. तो उनको तो एक्शन लेना पड़ेगा. तो वो कान खोल के नहीं सुनेंगे, तो हम कान के पास that's a fantastic job that needed to be done. कान के पास जाके चिल्ला Excellent. के बोलेंगे, ये देखो एविडेंस, ये देखो प्रूफ, ठीक है. और दूसरी चीज कि जहां तक बात रही थ्रेट की, तो ऐसा कुछ नहीं, बेसिक हमें प्राइवेसी का वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी आज की दुनिया में है. जैसे मेरे को एकदम 2020 में, क्योंकि इसलिए मैं अपना नंबर सबको नहीं देता, तो आया हुआ था कॉल कि बेटा तू मुंबई में आ, हाँ हम तेरे को अच्छे से बताएंगे. तो मैंने बोला वाह भैया, मतलब मार भी मैं खाऊं और फ्लाइट करके मुंबई में मैं आऊं, ऐसा करो, मुझे कम से कम फ्लाइट और होटल का तो टिकट करवा दो कि मार खाने में बुरा नहीं लगेगा. तो उसको लगा ये पागल होगा, फोन काट दिया. कोई नहीं, सेफ्टी है. हम सभी रोड पे इतना रोड करें, जो कीपिंग जोक के साइड, ऐसा कुछ नहीं. हम इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं कि हमसे पता नहीं, हम उनके लिए शायद नाइटमेयर होंगे, हमारी यूनिटी एक्चुअली. तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा. Right. Great points. और I'm really कहते हैं ना, not only enjoying this conversation, but बहुत सारी facts, बहुत सारी चीजें. तो नगेंद्र जी, डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एग्री करता हूं, और मैं इसके बारे में और थोड़ा आई थिंक चाहूंगा, बाकी को भी मैं सुनना चाहूंगा, बट आई वुड लव मोर इनसाइट्स फ्रॉम यू गाइस. आयुष, क्या कहना चाहते हैं आप बेस्ड ऑन व्हाट यू हर्ड? नमस्ते सभी को. और देखिए, अगर इन लोगों ने ना, ये कह सकते हैं कि बच्चों का खेल बनाया, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं दोनों. जैसे बच्चे होते हैं ना, कहते कि अगर तूने मेरी कंप्लेन, तूने अगर मेरी सीक्रेट बात मेरे माँ बाप को बताई, तो मैं तेरी सीक्रेट बात तेरे माँ बाप को बताऊंगा. बस उसी तरह से आपस में लड़ रहे हैं. और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर इन लोग पास सबूत है, एविडेंसेस है, तो ये बात जाके एजेंसी को क्यों नहीं बताते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको क्या मिलेगा? सपोज कीजिए अगर आपको सर्दी खांसी हो, तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे या मीडिया में जाके बताएंगे? कहने वाली बात ये है. और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप जाके एजेंसी को बताइए. आप भी वही बोल रहे हैं, आपके दोनों बेटे भी वही बोल रहे हैं. नहीं सर, उन्होंने एक वीडियो में पहले बताया था कि आई हैव गॉन टू द सीबीआई, मैंने सब सबमिट कर दिया है. उन्होंने एक बार शायद बोला था, बैकवर्ड जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो ये उन्होंने बताया, वी हैव सबमिटेड टू द. आप इसको बैकवर्ड में जाके देखना किसी वीडियो में, आई डोंट रिमेम्बर द वीडियो कहाँ था, क्योंकि उन्होंने ये बताया. नीतीश राणे भी यही बोल रहे थे न्यूज चैनल पे जाके. आज उनके पिताजी भी बोल रहे हैं 1.5 साल बाद. तो उन्होंने दिया होगा जरूर. देखिए,
अब मैं क्या कर सकता, अब जैसे अभी रुद्रा ने बोला कि ऐसे एविडेंसेस के बारे में हमने बात की है सीबीआई से, हमने दिया है कि अब उसमें उन्होंने जरूर ये भी डाला होगा कि जैसे रानी साहब ने ऐसे ऐसे एविडेंस दिए थे तो सीबीआई ने क्या एक्शन लिया. वी कैन पुट अनदर क्लॉज टू द सीबीआई लाइक दैट, और उनसे रिटर्न ले सकते हैं जाके, अगर कोर्ट में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वी कैन यूज दिस कि आपने क्यों नहीं बुलाया उनको. ओके, मैं चाहूंगा और कोर्ट में भी साबित करने के लिए एविडेंस थोड़ा सा वो होना चाहिए ताकि हाँ सामने वाला नप जाए इजी वे में. नप जाए, अच्छा लगा ये वर्ड, बट यह होना चाहिए. मैं चाहूंगा क्रिस्टीना धनराज जी, प्लीज आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी बोलें. यू आर म्यूट. यू आर म्यूट. I won't be speaking in Hindi because I may not express myself that well. Sure, no worries. I feel my understanding of this whole situation is that CBI knows everything. They have the evidence, they have the proof, they know who the people are involved in this murder cases, but they are not able to do anything because there is pressure from all other sides. Like India, in Bombay itself, there are so many terrorist cells there that nobody knows. But there are people existing and who are at the click of a finger will be able to start something huge, riots, a bombing, and you name it. Everything can happen. In this, I feel the central government is really planning a strategy so that they can clean up all these cells that are there and they feel safe to arrest whoever is involved. In my opinion, it's the government, the ministers that are involved in this. And if they arrest them, it could be a civil war right there because nobody knows what is going to happen. So the central government is trying to build something or plan something, a strategy that they will be able to control once they arrest the whole thing. First of all, they're trying to drop the Maharashtra government down. They want to dismantle that. And in the name of election, this is going to take time. This case is not easy because it's not like, oh, he was killed, let's go get the evidence. This evidence is there, so let's charge people. No, because the governments are involved and the Maharashtra government has the backup of the mafias like Dawood and all these people, and they have that backup, and Bollywood has its own securities built. So it's a lot of people that are there involved, and the CBI just cannot go and arrest a minister because it's not going to be an easy task to clean up that easily. It's a huge thing. It has spread so much all over India. I'm really deeply saddened by it, but there's nothing we can do. It has to be a cleanup inch by inch, and then only they will be able to get to the target and arrest them. It's not going to happen overnight. It's going to take time. It's really going to take time, and it's a question of even another year, and all we have to do is stand up for justice. We SSRians can stand up for justice and raise our voices and not let it die, because that is the only thing we will be able to do. And just taking protest here, protest there is not going to work. But we all have to be united, stand strong, and raise our voices so it doesn't die. We have to keep this movement live.
then only it will work. It will not only work for Sushant's justice, it will work for basically everything that has been happening in Bombay. It's like I mean, all this nepotism, the Bollywood situation, and I mean, it's a lot going on there. It's too much. And I cannot even understand what situation Modi is in. He will be a mess just to strategize this whole thing. So he has to really patiently, every step he takes, he has to be careful, because otherwise it's going to be a big issue and there will be a civil war. There will be, because the Maharashtra government has the backing of the mafias. So, and money speaks, so they have the power, and he has to more prime minister has to just work it out in such a way that everything will go in the right direction. That's my understanding of the whole thing. Right, But right. and No, I know for a fact that it's not going to happen overnight. It's going to true. take time. Oh yeah, for sure, for sure. And you brought up very good points. I like Girija to kind of add to this. Being from Mumbai, from that particular side of the world, I think Girija you can definitely give us more insights and more perspective around it. I totally agree with Krishna ji because I have lived there. I tell you, there was this time when Mrs. Minata Kareji, Minathai, she passed away. And I was pregnant with my son. And I was the 9th month of pregnancy, and I was taking class. My principal comes and she says suddenly, Girija, please leave for home. I said, what happened? She said, Minatai passed away, Mrs. Thackeray, so suddenly. And I said, so what? So is it declared government holiday? Lecture is going on. She said, no, I think there are some riots going on. Please go home immediately. I got down, I took a rickshaw, and I was on the way. I probably must have crossed one signal. I saw all the shops being pelted with stones and they were shutting down the shutters. She died a natural death. There was power failure in the area in New Bombay where she passed away. And for that, they were breaking down all the shops and closing down the shutters. And they suddenly came on the road and they told the auto driver, Utaro, unko utaro. Then the auto driver said, वो मां मरने वाली है उनको घर लेके जाने दो हमको नहीं पता नहीं तो अभी पत्थर मारेंगे उतर के चलने दो. It was around 40 minutes walk for me, and I was so scared because people were throwing stones helter skelter, and I didn't know what to do. I was just standing on this. Those were days when there was no cell phone. Then luckily next to me was an Udupi restaurant. I went and sat there, and the Udupi restaurant said मुझे वो भी बंद करना पड़ेगा. Oh, he was closing. When I get down, he said, आपके मामा जी की घर यहाँ है ना, मैं लेके जा रहा हूँ आपको. Suddenly he remembered. I didn't remember. And he took me by the side, this thing, and I went to my Mamaji's house. He called up my husband from there and he told me Girija is there with me in my house. And after everything stops, I will bring her there. You be home with the children. Please don't go to office. This is the situation. Okay. My children, my neighbor had gone and he had brought them from school. That was the situation. So, like you said, one move by the government, this is what will happen. We saw during the farmers' movement. Now there is truckers' movement in Canada, and immediately you know what has happened. They imposed emergency, and then they are declaring them anti-socialist. We did not do it in India. That is why it peacefully died down. There were protests. People were getting very angry with the central government, but the government was very patient. They had 11 round of talks with the farmers. The farmers, the actual farmers were ready, but we all know who were there, right? But since the world was against them, the government said, okay, let it be all right. So even though there was no fault of the prime minister, he said he came because he thought of the larger good of the country. He didn't want an internal civil war. So he came and said that if I have not communicated properly to the farmers, that is my mistake. I take the responsibility on my head. This is what a father will do.
because he thinks of the welfare of the children. This he came and said. So even though many people poo-pooed him and made fun of him, that he's, rolling back the carpet, he has no courage, this, that, and everything, he did that. So where it is required, where it is possible, abrogation of Article 370, did they not bring it up properly? So where it's possible, they do it. Where it is important, like for example, West Bengal, what kind of riots took place. He did not utter a word, even though everybody, including me, I was so upset. I said, how come your BJP workers are dying? Is there no value for their lives? But then what I came to know internally is, yes, I value the life of BJP workers. But what about the common man? So tomorrow, if 500 BJP workers' lives are at stake, but 5,000 common people's lives will be at stake. So it is, whatever is the minimum damage, that is what you need to look at. So think of the larger good. That is what. So that has been the condition. So, like she said, we have to be patient. Now, what do we have to lose now? If we now there is an opportunity for us to elect a different government, what do we have to lose now? We very well know from the present government we are not going to get justice. Give the opportunity, and if it doesn't happen, then it is democracy. We are not going to keep quiet. But like ma'am said, we have to be patient, we have to be persistent. Again and again, this is what I believe. Patience is not just keeping quiet, patience is keeping quiet with positive attitude, not getting surly, not getting insulting, not getting angry. When things don't go our way, what is the reason? Why is it not happening the other way? What could be the difficulties on the other side? Trust the leader first. That is very important, especially when they have proved their mettle in many other places. Then we need to look at that. So I request everybody, yes, our emotions are running very high. There are not a single day that I don't shed tears looking at the boys' picture. Okay. But we have to bide it. We have to be patient, and we have to be strong. We have to be united. And it is like Rudraba said, there is no fear because we are all united. So we have to stand united, keep consistently raising our voice. If people think that if there is no action, it will die down, we have to say no. In fact, more members will come to it because we will get more time to talk to people and more members will come to it. Like Rudraba said, wear t-shirts with, I saw that. I hope that soon we'll get the t-shirts and we can buy them. If somebody can make it and sell it, all of us will buy it, right? With those QR codes, so that anybody can just take it and they will see the proof. Let them now say, after seeing the proofs, that he was not murdered. Right. Who will say that? Only blind people. Yep. So let's wear t-shirts with that. Let us, everywhere we go, let's do that. Speak for justice. If we don't stand for justice for him, it means we don't stand for ourselves, for our own children. And all of us have to be emotionally invested in it. Don't look at it at SSR, Bollywood, crime. Or if nothing, no goal we will ever succeed in life if we do not see some emotional goal in it, some emotional attachment in it. So if I say that I have to save 10 lakhs, I will not work for it. But if I say with this 10 lakhs, I'll be able to educate my son, or my daughter will have a married life, or my daughter will study like this, and I imagine that life, then I become emotionally invested there, then I feel like working hard for it. Similarly, every one of us must realize that our brother, sister, son, daughter, grandchildren cannot live happily in that country if we do not today stand for Sushant. If we think of that, then we'll never ever let this die down. So that is why it is important to be emotional. People say, oh, why are you shedding tears? Emotion is energy in motion. Emotion is not making you weak, it makes you strong, your willpower strong. So let that emotion burn. Keep alive that emotion, and at the same time keep it under control. There should be balance. We should balance it out. Thank you for the opportunity, Varun. I listened to everybody, and everybody is really speaking sense here, and I would like to listen more to everyone. Sure, Thank you sure. so much.
Thank you so much. Yes, VD, please. Varun sir, can I हाँ make जी, a point before I leave? sure, sure. Just, I wanted to say हाँ जी, one हाँ जी, thing. You see, बोलो. earlier we had heard during the earlier when the Disha case was being investigated by CBI in the initial stages. Later we heard that it was given to Mumbai police. Okay. Again we heard that this place is closed. As far as I don't know what's the status of this case. But what I want to say that that case is critical for Sushant's case. Very, very critical. Because it seems to me there is a first-hand evidence to that case, okay, which has been silenced and which will speak given the security or opportunity when it comes. So that case is super critical to Sushant's case. And if that case is closed, then it might be very difficult. Okay, it's my personal view. Okay, it's my personal. I've always been saying that the Disha, right from the beginning, I was saying, but because I am sitting where I am, I cannot get the first-hand information. So there were a lot of people, even a politically strong person was there who used to say that CBI is investigating that case. But somehow we came. I have a feeling that that case is closed. I don't know exactly what's the status of that case. And there were strong interlinks between this case. Some people are saying because the family is not supporting that case is closed. I don't agree because there are there is a rumor that it is closely linked to Sushant case. So how can it be closed? And it's not the family's perspective since it's a murder and it has connotations to other murders. It cannot be closed so easily. It has to be investigated, properly investigated. And there were some medical reports also which suggested that there were something more to it. Okay, so I believe the Disha's case is super critical and some evidence lies there and maybe there is a first-hand proof also to it. Yeah. So मैं थोड़ा सा yeah, यहाँ पर नगेंद्र जी थोड़ा just a clarification. 2 points. One, Disha's case was closed very soon, very soon. मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ. And the family, I think they did one or maybe two interviews max. और उन्होंने बिल्कुल very clearly said, we don't see anything wrong. Please don't mention rape and all that stuff. It was if I'm not wrong, it was called as an accidental death or something, but it was a death and they don't want it to be pursued. Second, there was one petition filed by some individual to take CBI thing into this case, but that never, even the Supreme Court did not even consider it. Maybe because ऐसे cases में I think only the family can do that, not an individual, you, me, or anybody else. I think if I'm not wrong, even शरण जी ने शायद बताया था या किसी ने बताया था हमें कि वो इंटेंशन देखते हैं कि हाउ आर यू रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस. See, already Supreme Court has given the ruling that anything that is connected to SSR case can be opened. Correct. Number one. yes, Number two is, you yes. remember Anvay Naik's case. It was closed by the police, but when they wanted it, they opened it. So if this government goes and another government comes, then they will open it. Even if it is closed, it will reopen. Right. It will But reopen. yeah, At that point of time, even Disha's parents may have the courage to come and speak. yeah. Now the condition is such that they're not speaking. But ma'am, I wanted to say one thing. I said it earlier also. Much earlier, I also said, if this case has connotations to other cases, it relates to other cases, then it's not only it doesn't fall within the ambit of the family also. It has a larger perspective. And then you cannot take the excuse that family is not filing a case because there are other people who are involved. Correct. Because of that murder, some other murder has also happened. Right. And that is the reason. And there were proofs also. There were interlinks between this case and Sushant's case. Right. And so that is the reason I am telling ki in the initial stage, I believe this Disha case was with CBI and CBI was investigating because CBI went to their house also.
Okay. So we know that CBI was investigating that case, and that's why No, no, I'm no. telling. तभी मैं यहाँ पर, no, no, no. So that's why I'm clarifying. That never happened. Police was investigating. CBI never investigated नहीं anything. I'm sorry मैं बीच में कुछ इंटरजेक्ट करके कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू सो मच नागेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो नाउ मेरा क्या टेक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि, और मैं उसके लिए वैलिड पॉइंट्स भी मैं कुछ अपने तरफ से रखना चाहूंगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट की है दिशा केस को और आगे भी कर रही होगी, अभी भी कर रही होगी। मैं कैसे बताता हूँ। पहली चीज कि सीबीआई को कौन सा एफआईआर गया था, बिहार पुलिस वाला, राइट। बिहार पुलिस के एफआईआर में मतलब उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसको फॉरवर्ड किया हुआ था। उसमें दिशा सालियान के एंगल का मेंशन है। अगर आप एफआईआर को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है पढ़ोगे तो उसमें दिशा सालियान का एंगल जो है मेंशन है, ठीक है, कि एक ही पॉइंट में है बट है। फिर जब ऋषिकेश जी थे बेंच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्टिस ऋषिकेश जी और बाकी जो थे, उन्होंने ये कहा हुआ था कि ऑफ कोर्स जैसे गिरिजा मैम ने बहुत अच्छा बोला कि जो भी मर्डर्स या जो भी डेथ इससे कनेक्टेड है, सीबीआई को फ्री हैंड है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नंबर 2, तो पहला होता है एफआईआर में भी है, ठीक है। दूसरा हो गया वो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, दिशा सालियान सिर्फ सुशांत सर की मैनेजर नहीं थी, वह जो उसमें एक्यूज नंबर 1 हो गई रिया चक्रवर्ती, उसकी उनकी भी मैनेजर रह चुकी है एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, राइट। तो ये 3 एंगल निकले। चौथा एंगल, सीबीआई की टीम जो है एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप का रिपब्लिक ने दिखाया हुआ था, यू कैन फाइंड इट थोड़ा वो करके, कि जिसमें वो जहां से जिस बिल्डिंग से गिरी थी, मतलब कहा गया था, तो मतलब फेंका गया था जो भी कुछ है, तो वहां पे सीबीआई की टीम गई थी इंट्रोगेट करने, इन्वेस्टिगेट करने। आप जिसको के भी हाल फिलहाल में पता चला कि वो तो ऐसे रोहन राय का घर है, तो जो भी है, तो सीबीआई की टीम पहुंची थी। यह सारी चीजों को अगर हम कड़ियों को जोड़े तो हाँ, केस का अगर स्टेटस की बात करो, मुंबई पुलिस के तरफ से केस क्लोज हुआ है। सीबीआई को कभी भी उसको रीओपन तो तब हम कह सकते हैं ना जब क्लोज हुआ हो। सीबीआई को तो शुरुआत से इस चीज पे वो देख रही होगी जब एफआईआर में वो नाम मेंशन है, तो सीबीआई तो अपना कर रही होगी। और नॉट ओनली दिशा सालियान, मेरा ये स्ट्रांग बिलीफ है कि जो भी और भी 40 अप्रोक्सीमेटली 40 या जितने भी डेथ्स हैं उनको भी सीबीआई देख रही होगी, क्योंकि they were being told about the same. So that's my take. Yeah, Okay. thank you, बहुत Rudra, for giving that information. I think I feel little satisfied with your answer. Thank you so much. Right. मुझे 2 पॉइंट रखने हैं कि सबसे पहले तो किसी ने बोला था कि वो आया होगा मर्डरर वहां पर, तो सबसे पहले जो कल्प्रिट होता है ना, वो अपनी सेफ्टी भी देखता है। मान लो अगर उसको किसी का मर्डर करना है तो वो ये सोचेगा कि मैं ना फंसूं, इसलिए वो अपने किराए के टट्टू जो होते हैं वो उनको भेजेगा मर्डर करने के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके, जिससे क्या होगा कि वो कहीं ना फंसे। सेकंड पॉइंट, जो किसी ने बोला था कि नारायण राणे को सिक्योरिटी की जरूरत होगी, ये चीज होगी, वो चीज होगी, तो जो कबाल बोले, कल्प्रिट बोले, उन्होंने पहले ही अपने पैर पर बहुत कुल्हाड़ियां मार ली हैं। अगर ये कुछ करते हैं और इनको कुछ होता है तो ये कल्प्रिट्स को ही बैकफायर करेगा एक तरीके से हम देखें तो। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो अभी वो डरे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शन कल्प्रिट्स की ओर से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमारे ओर ही बैकफायर करेगा और उल्टा ये इन लोगों को तो सपोर्ट मिलेगा पब्लिक की ओर से, जो कल्प्रिट नहीं चाहते हैं मिले, इसलिए वो अभी इनको कुछ कर नहीं रहे। वरना करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आगे जो चीज होगी उसका उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है, हमको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी आगे भविष्य में। तो इसलिए अगर नारायण राणे जी अगर कोई चीज को बाहर रखते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भाई उनको इतना कुछ खास होगा कुछ। जिस तरह से अभय भाई ने बोला कि किराए का टट्टू भेजा होगा, तो अगर किराए का टट्टू भी अगर नपेगा तो उसके साथ साथ उस मास्टरमाइंड का भी नपना जरूरी है जो कि उसको ऑर्डर दिया होगा।
क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। नपेंगे तो सारे ही, I love to hear VD, बहुत देर से he's been waiting, और उसके बाद there are certain things that definitely I will read out certain things यहाँ पर, even though I really honor and I regard everybody for their sentiments, but guys, there are certain facts which are available in public domain, तो मैं वो जरूर पढ़ूंगा, but पहले मैं VD को सुनना चाहूंगा. VD, please go ahead. Thanks, Varun. Hi, everyone. Hello. What I feel is, one, that today's this session that we've done so far for the last about 2 hours, 1.5 hours, I think this is one of the most intelligent sessions that we're doing, because every input is coming in from every angle. At the direction from where I look at it, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि एक नेवी ऑफिसर की पिटाई हुई, जो भी anybody who's trying to make a noise against, it came basically when somebody was trying to put it against Thackeray, आदित्य ठाकरे. तो वहां से कहानी शुरू होती है बेबी पेंगुइन से. How I feel is that there is something got to do over there with him, which I think everybody has a feeling, and maybe not now, might take some time. Maybe it comes before the government has to leave. Mr. Modi's term, that election would again pop in 24. By then, it has to work out. But the only thing is that in case if we keep the rigor is on by the Indian public and the global public, like Varun Bhai is doing it from there. And also there was some, in case if you could correct me, Varun Bhai, you would be having the information, which is about, there was a eyewitness who had said keyhole se dekha tha, us din raat ko party mein maujood tha. And this was only his voice was, audio was given on, I think, Z News when they were covering it in 2020. तो उस समय में दिखाया था कि he had seen it through the keyhole and he saw that Disha was on the bed. TV Today. हाँ जी. TV Today. Some of the news channels that said that he was an eyewitness. So CBI for उन्होंने उसको CD बना के वो एविडेंस CBI को भी सबमिट किया था. TV Today. हाँ जी. तो मेरे हिसाब से ये केस जो है उनके पास पूरा है और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से इसको क्लोज नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन इलेक्शन सबके आने हैं, मोदी साहब के भी आने हैं, बीजेपी के भी आने हैं. अभी किसी ने अपना व्यू पॉइंट, सबके हमारे व्यू पॉइंट्स ही हैं अभी तक. अभी मैडम ने बोला था थोड़ी देर पहले कि अगली गवर्नमेंट, अगर इस गवर्नमेंट ने नहीं करा तो अगली आएगी, अगली करेगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड ओवर देयर ऑल्सो. और आई डोंट थिंक अगर पब्लिक ने नहीं छोड़ा तो इसको कोई गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. ये केस इस समय ना हो, बट इट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर एवरीबडी. एंड अगर ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही है तो जिस चीज की वजह से ये दब रहा है इस समय, उसी चीज की वजह से ये उभरेगा भी. राइट. नहीं, आई थिंक ये जो जिस आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं और वो काफी सेंसेशन हुई थी, उसके बारे में बहुत सारी चीजें कही गई थी. लोगों को उस घर से, साइड से निकाला गया था, railway station. I faintly remember all that. I think we should definitely revisit that. But there have been so many things that have been said and done. But ये 2024 से पहले I hope my gut feeling says कि चीजें होंगी, expose भी होंगी और clear भी होंगी. But there are certain things that are really not going in the right direction, जिसके लिए हमें obviously बहुत कुछ करना पड़ेगा, and we have to continue to raise the voice. Now, the only thing before this thought process goes away, and unfortunately, I really want to share. Rudra was here, and then Nagendra ji also mentioned. Let me just read some statements here from an article. This article is dated. This news article is dated October 29th, 2020, और इसके अंदर लिखा हुआ है Sushant ke gym partner Sunil Shukla on Thursday approached the Bombay High Court seeking a CBI probe into actor's former manager Disha Salian, who died under suspicious circumstances. In the petition, Mr. Shukla claimed that both Ms. Salian and Mr. Rajput died under the suspicious circumstances and that the Mumbai police has not considered several aspects while probing her death. The petitioner, Shukla, has documentary evidence to prove
that Disha Salian and Sushant Singh Rajput were in touch from March to April 2020. And it also added that Central Bureau of CBI is already probing the death of Mr. Rajput, and hence even Disha Salian's case has to be handed over to the Central Probe Agency. This is the only thing that has happened, but this one was completely removed, and there was no the only plea जो around दिशा सालियन की थी. Bombay High Court, this is an article again dated November 27th of 2020. So after a couple of months, the Bombay High Court has dismissed the PIL seeking CBI probe into Disha Salian case. So again, maybe I'm wrong, but I will have to dig into it. There has been no, but yes, the only thing that I can say is just because Sushant ka case CBI के पास है, and any such connection that comes up, चाहे वो दिशा का हो, चाहे वो और बाकी सारे लोगों का हो, all of these will still get opened up in case they are able to find those evidences. But at this point of time, at least for Disha's case, the only petition that was filed was removed and completely quashed. And if I am not wrong, and if I remember it correctly, the logic, the reason given was that this has to come from the family has to speak. Now गिरिजा जी एक बहुत सही point बोल के गई कि maybe they are under pressure, that's why the family did not even get, and if the government changes, maybe they will be able to open up. But at this point of time, this is what the articles that were floating around in 2020 around everything that has to do with Disha's case, they state there was no CBI kind of investigation in Disha Salian. So I just वरुण wanted सर, to listen. वरुण सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. हाँ जी, बोले. Say there is a bomb blast. हाँ जी. Say there is a bomb blast, okay, and say किसी का family member मर जाता है. हाँ जी. Okay, and then the family says we don't want the investigation because हमें लगता है ये natural death. Will it be allowed? Or will there be investigation? I mean, investigation तो होगी, right? हाँ, नहीं, फैमिली बोल रही है ना, हमें नहीं चाहिए, ये नेचुरल डेथ है. नहीं, बट सिनेरियो डिफरेंट है, राइट? आप you're saying कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट, सिनेरियो डिफरेंट नहीं है because this is a closely related case to Sushant's murder. That's what I said. अगर ऐसा होगा, obviously सुशांत के केस में, अब जैसे बॉम्ब ब्लास्ट इज सुशांत. और एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ. हाँ जी. The lower court cannot rule the judge. सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है, all cases related to Sushant's case needs to be investigated. The lower court cannot override the judgments of Supreme Court. Correct. Okay, because Supreme Court instructed it. So the CBI is fully in purview, but I don't know whether the local government, the local courts will allow it. वो एक डिफिकल्ट टेक्निकल इशू है जिसके वजह से शायद सीबीआई उस केस में आगे नहीं बढ़ी या बढ़ी. जैसे रुद्रभा बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, तो इट्स फाइन इफ इट्स हैपनिंग, बट अदरवाइज मैंने जैसे बताया कि ये बहुत सुपर क्रिटिकल केस है, दिशा का केस, इन सुशांत केस. और हमें ऐसा भी पता चला था कि उसको कॉल्स आए थे सुशांत को दिशा के मोबाइल से, है ना सर? इवन आफ्टर द डेथ Disha's mobile was used to call Sushant. Exactly. Till 18th her phone was used. That is a critical information to investigate Disha's case. It doesn't remain till the family. ये family के purview तक रह नहीं जाता. Correct. Okay. I am using the analogy of the bomb blast to just prove that when a case runs, कहाँ पे एक case family के उससे छूट जाता है. ओके, बिकॉज इसमें बोलते हैं कि हम लोग के इंश्योरेंस में एक टर्म है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ओके, सो हियर द इंटरेस्ट ऑफ द सम अदर मर्डर केसेस इज आल्सो देयर. इट इज नॉट ओनली द फैमिली हियर. ओके, फैमिली का तो छोटा सा मैटर, अगर वो फैमिली से ही रिलेटेड होता देन द फैमिली वुड हैव बीन फुल्ली इन ए ये. मैं लॉयर तो नहीं हूं, बट
एक अपना जो जजमेंट के हिसाब से मैं इस बात को पेश कर रहा हूँ कि अपने जो एक सिंपल बुद्धि के हिसाब से मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ. Got it, got it. No, I agree, and that I understand. Absolutely. और सुशांत के केस में जिस तरह चल रहा है, I am sure there is a very direct link to Disha's case, and उसके basis पे there will be investigation, irrespective family क्या कर रही है, क्या कहती है, क्या नहीं, will definitely be investigated. So I completely agree on that. और मैं चैट में एक चीज और देख रहा हूँ गाइस, मैं एक चीज दोबारा बता देता हूँ. थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में मैंने पढ़ा था. ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट हर्षा's केस जो भी है. जस्टिस फॉर हर्षा इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग. और कल का ये है बेसिकली इंडिया की रात को 9 बजे बजरंग दल के कोई एक्टिविस्ट हैं हर्षा. ही हैज बीन किल्ड इन कर्नाटका एंड 144 लग चुका है इस टाइम पे इन द सिटी. हिजाब को लेके हुआ है. किसको? हिजाब का जो ड्रामा चल रहा है. अच्छा, ओके. सो हाँ, तो इसके बारे में लेट्स फर्स्ट गेट सम इंफॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग. तो आप लोग जो चैट में कह रहे हैं कि वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अभी पता लगा है, एंड टिल द टाइम वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, वी रियली डोंट वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ रूमर स्टार्टेड या किसी तरह की और इंस्टिगेशन नहीं चाहते. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली थिंग दैट आई नो और आई हैव रेड नाउ इज ही वाज अ बजरंग दल एक्टिविस्ट हर्षा, जो 26 साल का था, एंड ही वाज किल्ड लास्ट नाइट 9 बजे कर्नाटका में. और वहां पर इस टाइम पे बहुत सिक्योरिटी हो गई है. सो वी विल फिगर आउट, विल डू दैट. ऑलराइट, गिरिजा जी यू बैक. डू यू वांट टू Can I ask you one more thing? हाँ जी. जो एक सुशांत के नौकर थे, जो जिनको अरेस्ट किया था अभी कुछ ड्रग्स केस में, आई रिमेम्बर. ओके. क्या वो रिलीज हो गए हैं सर? आई वांट टू नो दैट. अभी तक तो मुझे जो जितना भी याद है, और अगर मैं थोड़ा रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, पिठानी इज इन कस्टडी, बट बाकी सब, चाहे वो शौविक हो, चाहे वो बाकी सब लोग हैं, उन सबको बेल दिलाने में सक्सेसफुल हुए थे और उनको बेल मिल गई थी. और एक दो तो अगली नौकरियां भी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली. Okay, Shah Rukh Khan's son is released, everybody is released, and this guy is in jail. So it's quite surprising to me the way the law works. ये क्यों वहां है मुझे ये नहीं समझ में आता. Okay, the same drug case, everything. Yeah. हाँ जी, गिरिजा जी प्लीज क्या कहना चाहती हैं? Dipesh Sawant is in custody from September 9th onwards for his involvement in procurement of drugs. It is given there. Okay. Sushant's housekeeper Dipesh Sawant held in drug case. This was given by the Hindu. It is given there. Yeah. So he is in custody only. And he has not been released after that. Okay. I thought उस time पे he was also one of the people who got bail. Yeah. But okay, thanks for clarifying. Yeah. Yeah, he was arrested in 2020. September 6th or something. Yeah. एक केशव भी तो था. केशव तो भैया अपना लगा हुआ है. He is also working somewhere. Keshav, I think we did not even see him on the day of the demise. We did not see him. I think he was sent out even before that or immediately after that. Before even during the investigation, the police, none of the times he was there around, it seems. He was not investigated. He was not called in by our Republic or any other channel. He was not around. That's what. And also Samuel Miranda. Yeah, exactly. We did not see both of them. Correct. Yeah. All right. But overall, जो इस टॉपिक पे तो यही है कि सुशांत के लिए कल जैसे सिस्टर ने भी कहा, I think CBI, I don't know, and I'll maybe check with Rudra if we can, maybe raise something against that or around that. CBI should get in touch with Narayan Rane and get the information that he has. Because end of the day, if he has these evidences, they have to be submitted. ये अगर सबमिट हो गए होते, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बार बार उसके ऊपर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एविडेंसेस का ऐसा है, देयर आर पीपल दैट आई नो ऑफ हु हैव submitted evidences to the CBI,
एंड वो सबमिट करने के बाद दे आर गिवन अ लिटिल बिट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन that you cannot open your mouth. One. Second, whatever evidences you produced, you cannot reveal anything around those evidences that have been submitted, because otherwise there will be some kind of legal implication, as well as, of course, they get diluted. So so I am kind of in a kind of a mix right now. मुझे नहीं समझ आ रहा which side to believe, which side not to. But like Rudra भी कह रहा है कि yes, let's do it ASAP. So yes, Rudra, I think we should uh, either start some kind of a petition ka, I again fail to understand, even if we open up, we don't get any actionable output out of it. तो अभी के लिए I think the way we can do it is maybe we should start some kind of online movement where we continuously request Narayan Rane to submit these, or the CBI to reach out to him Yes. and raise that voice. I think we should definitely do that. We really want this to be clarified ASAP. 1.5 साल हो चुका है. August of 2020 was the first time when Mr. Rane mentioned about this, and it's gonna be almost 1.5 years ho chuke hain, and he has definitely not done anything around that. So, और जैसे अभी नगेंद्र जी कह रहे थे, हो सकता है करा भी हो, but exactly, yeah, Rudra, I also feel the same about petition. So let's not even go that route. More importantly, let's start an online movement where we keep on pushing. All right. Before I end this session, anything else, Vidi or Ayush, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, I think it's up to date. Thank you, Varun bhai. Thank you, Vidi. Ayush, आप कुछ कहना चाहेंगे? कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसका जो अब ये देखने वाली बात है कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, क्योंकि अब एजेंसी को अब जाग जाना चाहिए और बता देना चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ तक काम किया है. एग्जैक्टली नहीं, एक अपडेट तो आना चाहिए, बट या कल की मूवमेंट से इतना तो हो गया कि नाउ एवरी नेक्स्ट मूवमेंट दैट और नेक्स्ट protest that will happen with a lot of energy, with a lot of zeal, because our family is also, and we've seen, the family also has this almost the same kind of issues, same kind of questions, same kind of concerns, and that is really very important that we keep on highlighting this and we keep on talking about it along with the family. तो कल बहुत सारी चीजें बातों बातों में, again we also have to read between the lines के what was Meetu Di's intention, या प्रियंका दी ने जो बोला मिस्टर राणे से रिलेटेड, how we can take it forward, and we really need to take it forward, simple as that. क्योंकि ऐसी चीजें obviously cannot be always brushed under the carpet, so they have to be raised. So thank you. All right, before I end, I see Shri here. Shri, please go ahead. Yeah, hi, hello everyone. I mean, I have no words for the session we had yesterday. I mean, the protest, it was awesome, awesome, awesome. What a renewed energy, what renewed life to this movement again. I mean, fabulous, and kudos to Delhi Warriors. Huge respect, huge salute. I mean, really thanking them because they did it for us, for everyone, representing each one of us. So that was really, really awesome. Now talking about Narayan Rane ji, I will have to watch this session again because I missed the session. I joined just a couple of minutes back. What I feel is this is definitely mockery of the judicial system here. I mean, imagine one union minister, and otherwise before union minister also, he was at a prime position in the authorities, in the politics, right? And he is, I'll give you a basic example, right? Even if there is a hit and run case, I mean, it is equally important. I mean, the person has not lost life. या किसी के घर में चोरी हो गई. If I keep saying कि अरे मैंने तो देखा है चोरों को भागते हुए, मैंने तो देखा है, और एक नॉर्मल लोकल पुलिस में भी अगर उसका कंप्लेन है, पुलिस आकर मुझे घर से उठा के पूछेगी कि भैया बताओ कि क्या देखा है, किसको देखा है, टाइप्स, राइट? सो दिस इज अ मैन, इट्स लाइक अपनी मर्जी आता है, वो मुंह उठाकर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और बोलता रहता है कि इट इज अ मर्डर, इट इज अ मर्डर. इतना मैसिव मूवमेंट चल रहा है, एंड I mean, are you kidding me that CBI has yet not reached out to him, or he is also not reaching?
कि मैं जाऊंगा जब सीबीआई बुलाएगी? क्या शादी हो रही है क्या कि बारात में तब नाचूंगा जब बुलाएंगे तब? What nonsense is that? I mean, from both the ways. Okay, so I'm equally agitated, be it CBI's role or I do trust in CBI. I'm not saying that, but then I really don't know what kind of politics or what kind of gimmick they are doing on a public platform, right? You come jab, and abhi now when you, I mean, this is like why I personally feel it is a gimmick is because of the vote ka thing कि जब सरकार बदलेगी तब हम बोलेंगे. अरे भाई तब होगा, तब लोग बाहर आएंगे. व्हाट डू यू मीन? लोगों की लाइफ क्या इसमें होगा कि कांग्रेस रूल कर रही है कि बीजेपी की शिवसेना की whosoever is ruling the world? I mean, आप उसके हिसाब से लोगों की लाइफ दांव पे लगी रहेगी क्या? I mean, we have selectively right to live. Who is in power? तब हम जिएंगे क्या? I mean, what crap is that? I mean, I'm really sick and fed up of this. The dirty politics that they are using for playing with people's lives. I mean, this is like sending such a wrong example. Itna heinous crime hua hai, and we know about it, but we will keep playing. I mean, do they realize there is a young life being taken away, and आप उसको पेंट कर रहे हो कि oh this is a suicide, and multiple किसी का मर्जी आया उठाया रेप किया फेंक दिया मार दिया and then वो suicide. मुंह उठा के जिसको बस मारे जा रहे हैं, जो करना है वो करे जा रहे हैं. सुसाइड है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया. What kind of gundaism is that? I mean, such a pathetic state of affairs in I mean, very sorry to say, but yahan par I'm not saying that there are a lot of positive things about my country, but this is like so scary, and such a scary message these politicians are sending across by doing this gimmick. So really sorry, but having said that, positivity is a mindset, right? So let's move forward with this strong mindset to ensure justice is delivered to the innocent souls like Sushant Singh Rajput, Disha Salyan, and many more who lost their lives in the brutal hands of these gundas. I call them gundas, that's it. For me, they are like the most brutal gundas. So Sushant believed in standing alone is better than walking with wrong people. So stand up for what is right, regardless of who is committing the wrong, be it the politicians, be it these mighty gundas, or whoever it is. Let's convey our message to these strong, mighty, powerful gundas that common citizens' voice matters, and we are not going to take their gundaism. We are not going to be mute spectators to their vulture attitude towards innocent, pure souls. They just cannot walk over anyone's house, displaying their power and taking away innocent lives to cover up their heinous deeds. This needs to stop now and forever. So we need a safe place to live and breathe. We need to breathe. It's about like oxygen is freely available, but हमारी life तो इनके हाथों में है कि कब आके मार जाएंगे. क्या चीज इन्हें हमारी नहीं पसंद आई और आके मार जाएंगे. So we need our country to be in safe hands and safe for everyone, irrespective of their social strata. So we vote judiciously. We don't let such gundas to come in power who can play with our lives. So success is about fulfilling the intent behind our action. So let's believe strongly in our good intents and actions that would definitely lead us to success in our justice movement for SSR, Disha Salyan, and many more, right? So justice for Sushant, if it is delivered, and I'm sure we will ensure that it is delivered. So this will set a very right precedent for the society and contribute to make this world a better place to live in, and not people don't live in that scare of losing their lives every day. And so right to live, right to life, right to justice is the basic need of every human life. Let's continue to fight fearlessly, fiercely, and democratically. So justice for Sushant Singh Rajput, and CBI, please file 302 in SSR case ASAP. You have enough evidences. Please do it. Thank you, Jai Hind. Wonderful said. May I button down by just for a minute in continuation to this? Sure. Thanks. Very strong emotions, madam, put in very bluntly, which was wonderful to hear. But it's you can't deprive us of neglecting the fact that at the start to the end we are a corrupt country.
India, we being Indians, we living in a corrupt country, and everything that's happening over here is the political hands which is behind everything. So the only rigor which we need to keep over here, according to me, is exactly the punch that you're giving in, that Varun Bhai is giving in. You know, whatever little that anybody can do. In case if this goes on, I don't see, it'll take time. I don't see anything happening immediately over here. From starting from the start to the end, everybody's corrupt, whether it's politics anywhere. But whatever you said, keep your voice on, madam. I request you, just in the same spirit that you have at the moment today over here at this show. And Yeah. I mean, so I completely agree with what you are saying, that we live in the corrupt world and the country, but we do have good people too. So let's do our bit, right? Let's light up the world with the luminous features each one of us have within us. So let's contribute in our little ways for the betterment of the society. I begin with I'm being honest, and I will not be corrupt. So let me do my bit. Let me educate people in and around me. I think this is how we contribute for the betterment of the society. That's the indeed, least as we individuals, as the citizens, can contribute and hope for a better world. indeed, and that's the reason that I'm, I'm not cutting whatever you're saying. I'm adding to your words because Yeah, thank you. a voice like yours needs to be supported, whether it makes sense today or not. But with time, I see somewhere at the end when it goes rises, because what's happening is that voices initially about 2 years ago, all of the voices were as strong as yours. But with time, gradually, what's happened? Yesterday, when we saw a powerful show happening in Delhi, it needed a spark which came from it had to be initiated by one individual or 2 3 individuals. Varun was a part of this was a part of the team who's sitting so away from India. Then I think 2 3 people who joined over here who started this, and then it means that we have the emotions within. It's just that we need a push over here at the moment. Just with time, we settle down, we've adjusted to our lives, because this was the same rigor was there 2 years ago when Sushant's case took place. But gradually we settling down with things, and we now need a push. Somebody has to start it. The one announcement was done कि भैया 20 तारीख को you come over there, and gradually we saw that people came over there with the same voice, with the same tone, doing it. And I don't know what's happened to Mumbai. When the show a day before this happened over there was nobody seen over there. This boy Bharat had gone from Delhi. I was really hurt with this, that nobody joined in over there. People should have joined in. And Bombay people, get up. Don't become Mumbaiites. You're Bombayites. You should have the courage. In case if you're watching this, people should get up. Yeah. Please go ahead. I'm still waiting for Bharat to do a session, and maybe I'll potentially have him here and talk about it. There are more than the fear. I think there is lot more happening in Mumbai, especially those warriors. I'll share something. I know people might get hurt by me saying this, but right now the state of affairs is, because of all these internal nonsensical politics and whatnot. Kal Delhi wala, now it has somehow started becoming, okay, we are Delhi warriors, or we are of this particular group versus we are of this particular group. So how can we, support, or how we can jump on something supporting somebody else? ये यहाँ पर अब ये बन के रह गया है. कल के लिए भी जैसे there were sisters on the street, they were protesting and all that, but there are people who were part of this movement. They have stopped kind of talking about Sushant, or in a certain way, just because they don't want the other people to be highlighted in the same way. Kal jo kuch kiya, jo bhi Delhi Warriors kiya, there are people who don't maybe appreciate the efforts of the Delhi Warriors, so that's why they want to keep themselves aloof, away from that. Same cheese Mumbai mein ho rahi hai. वो सब warriors बड़ा, I mean, again, I don't want to get into the politics and the nitty gritties of it, but this has become more of a mess and a mockery, just because A doesn't like B and B doesn't like C. That should Varun, never have happened. yeah, so नहीं वरुण भाई, I mean, so again, sorry, go ahead. we need to rise above this personal thing, right? Because you are here for not यहाँ पर्सनल रिश्तेदारी या शादी नहीं करने आए हो, या कुछ अपना फैमिली नहीं एक्सटेंशन करने आए हो. मतलब we do see say we are one family,
but then you have to believe in what you're saying, right? You don't utter words just for the heck of it because you are somewhere in the movement and you're getting somewhat exposure and all. यहाँ कोई personal fame, कोई बॉलीवुड मूवी में काम कर रहे हो क्या कि मतलब मैंने एक्टिंग कर ली तो मेरी ज्यादा चली कि नहीं, मेरी ज्यादा पॉपुलर हुई कि नहीं. So we need to get out of that mentality. I mean, you are doing it for the cause, so do it selflessly, please. I mean, don't think about कि मुझे कितनी praise मिला या मुझे कितना exposure मिला या मुझे कितना क्या मिला. You need to get above that I, me, myself वाला feeling, that thought. And that is how you will people will stop about this कि मुझे उसको नहीं करना है. Extend support for the right thing. And whenever you can, whenever it is in your reach, irrespective of who is doing it, the cause is getting help. Cause को आगे बढ़ अगर बढ़ रहा है किसी के भी effort से, तो just be there. And the least you can support is, I mean, digitally, right? If you cannot be there in person. So that's it. Absolutely. I agree. Yeah, but I think both are the two sides of the same coin. It ends well, it starts well, or otherwise you can take it that if it starts well, it ends well. Initially, it was going differently when it started, but now again people have began coming. Whether it अगर वो Delhi करे, मेरे ख्याल से वरुण भाई आप जो point कह रहे थे, that is correct. But even अगर ये issue बन जाए ऐसे, like what I've understood that you were saying that it's become an ego issue कि Delhi में है वानी है. But even if you look at the positive side of this, in case अगर इसी से हो जाए that this triggers the courage of the Bombay Warriors. हम better करेंगे. है ना? Because भाई ये start हो गया है and I don't think this will come down now. Correct. And madam, आपके अंदर बहुत अच्छी आवाज है. You keep speaking like this with energy. I really appreciate. Alright, हमारे साथ एक मुंबई वॉरियर भी ज्वाइन किए हैं. The only मुंबई वॉरियर जो वहां पर उस दिन थे, विशाल. Hello विशाल, how are you? Alright, God bless you, Vishal. We saw you there with Bharat. Hi everybody. Good evening, Varun, and good morning, everyone. Good afternoon. So, Varun, I'm not going to be diplomatic when I say this because I heard this comment. People told me on one of the channel that I'm giving a diplomatic statement. This is a fact which is there on public domain. What I'm going to speak right now. So I don't care now what people will say after hearing my statement. Narayan Rane, day before yesterday, gave a statement on his last question when he was being asked that have you given this information to CBI, whatever you're talking on a press conference about Disha and Sushant's case. He said, if CBI will come to me, I'll give it to them. CBI hasn't called me for this thing. Am I right? He said this? Correct. Yes. November 2021, this same fellow, Narayan Rane, says, I have given everything to CBI. Now, what is it? November 2021, you say I've given everything to CBI, and day before yesterday, when you're doing a press conference, you're saying if CBI will call me or they will get in touch with me, I will give them all the information that I have. So, who is diplomatic over here? Who's giving different statements over here at different times? Once in 2021, that's just 3 months away from now. He did give statement that CBI, I have given everything to CBI, and now he's saying no, CBI has not contacted me for this. So we need to think about this. And I'm really sorry. I wanted to start with this. In fact, first of all, thank you to all the Warriors yesterday, and let me take this moment. The Delhi Warriors, hats off to their efforts yesterday. It was really amazing. And as Meetu Di and Priyanka Di came again after 14 December, we saw only Priyanka Di, but now we saw Priyanka Di and Meetu Di coming on the ground. So this is a tight slap to the people who say that family is not saying anything, family is not coming out. अब लो फैमिली भी भारा ही है. अब तो मेहरबानी करो, फैमिली पे सवाल उठाना बंद करो. Absolutely. Or do you want to say anything about what happened in Mumbai? I don't know if you want to, but again, if you need to. Sure, no problem, Varun. So what happened is we were been advised if you all can take up permission before you go to CBI headquarters because it will be risky going without a permission. So me and Bharat decided one day prior only, chalo ek kaam kare. We know the answer would be no, but why not to take a permission? So we reached CBI. Bharat came to my place. He picked me up. हम cab से गए यहाँ से and we reached BKC police station.
and Bharat filled up a form, not a form, you can say on a sheet of paper. He wrote everything that this is what we want to do. We need we are requesting for a silent gathering for around 10-15 people, and everything he wrote it, and he's taken a picture of it as well with him. So that's one very good thing which he did, keeping that picture of the application which we wrote, and we gave it to them. So there was an inspector in charge head over there. He read that. He denied immediately. Then he asked us to wait. We waited. He came out again. He was there in some meeting, and वो हमें वापस बोल रहे थे कि wait, let me check, and he was calling somebody. And if I'm not wrong, Bharat said he was calling somebody in Bandra police station. So was he calling the DCP of BKC itself or any other Bandra police station? No idea, but he was calling someone, and the application was in his hand. And then Bharat told me just move out and see if the cabs are, because the cab was still waiting for us, and our bags and all. My bag was there in the cab only. So I went out, and Bharat also came out, saying it's no point now to wait because they're not giving us any answer. They said no, but they kept the application in the hand, and they're not responding, and they're just asking us to wait. So it's pointless to wait over here. The reason we went over there, we wanted to also do this justice for SSR and sloganing and everything over there, but unfortunately we couldn't, because as soon as we reached over there, 5 minutes max, two cars of police came in, and if you can just imagine what had happened with Arnab Goswami, how what happened with him, same thing was like with us. It was like bang bang, two cars were there. We were literally they pushed us inside the car. अरे क्या क्या उधर फुटपाथ पे बैठने के लिए भी तुम उठा के लेके जाओगे हम लोग को? And the building besides that, if I'm not wrong, there's an MTNL office and there's one residential building. Security of those buildings were out. CBI की जो headquarter जो security है, I think those are military security guys जो military uniform में रहते. All of them were out and they were watching. Well, the person who came in, I think he was the DCP of the police station, and he's military asked for Bharat's name specifically, who is Bharat Druga. And then when Bharat said, yeah, I'm Bharat Druga, तो he said आप लोग पुलिस स्टेशन में आके एप्लीकेशन दे के गए और आप वहीं से निकल गए और डायरेक्टली यहाँ पे आके जो आपको मना किया था. And he literally took us inside the car, and then we went to police station, and then we immediately informed everybody in the group, and then as you also uh, told us ki Sharan ji will be there if you require anything, but that's what it was not required. He gave us a warning and he left. But what he said, like, we are giving you a warning and leaving you, otherwise तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देते, तुम्हारा करियर तबाह हो जाता, तुम्हारी लाइफ तबाह हो जाती. यार क्या फुटपाथ पे बैठने के लिए तुम हमारे ऊपर FIR करोगे क्या? I don't think so that you can do this. Just sitting on a footpath, you said don't protest. Okay, fine. दो जन का फुटपाथ पे भी बैठ नहीं सकते क्या वहां पे जाके? And that's not only CBI headquarters in that lane. There's MTNL का building, there's a residence building. अगर मुझे वहां पे अगर 2 मिनट अगर मैं आया हूँ किसी को मिलने को या अगर वहां बैठने को, तो ये लोग आके उठा के लेके जाएंगे हम लोग को. Right. And just a joke what happened after that, once we left from there, I told Bharat जिस हिसाब से ये दोनों पुलिस वाले आगे, पुलिस की गाड़ी आई थी हमें उठाने को, the inspector in charge, the DCP of BKC police specially came us to pick us up. मतलब भाई तो ऐसा क्या कर दिया था हम लोगों ने कि ये दो इतने बड़े रैंक के ऑफिसर आके हम लोग को उठा के लेके जा रहे हैं. So I just told इन मजाक में I told Bharat भाई अच्छा ये भाई वाजे या ये लोग मुझसे कोई नहीं था, ये लोग के अटैक पे कोई ऑफिसर था भाई, अपना तो एनकाउंटर हो गया रहता आज तो. किडिंग आई टोल्ड भरत दिस, मैंने तो भाई अपना तो एनकाउंटर हो गया रहता जिस हिसाब से लोग उठा के हम लोग गाड़ी में लेके गए थे. देन इन पुलिस स्टेशन ओनली भरत सेड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू माउंट ब्लैंक. No if no but we are going to go to Mount Blanc, being when we were there inside the police station. And then when Meetu Nani was on her way, Rumaji and Shabramji also were on the way to BKC. We called them up and we requested them, please go to Mont Blanc, do not come here, permission nahi mili hai, we have been detained, we'll keep you all posted. In the hot sun, 12:31 in the afternoon, they waited for us 1 hour, 1.5 hour at Mont Blanc. But still we were at police station, we were not released. So when we told them, please you all leave right now because we are not sure till how much long they're going to ask us to wait over here.
But then finally, around between 2:30 to 3, they left us. And then we went to Mount Blanc. And as you all can see on Bharat's channel, we at least rode over there if we couldn't do outside CBI office, but we did that outside Mont Blanc. So this was just a small summary of what had happened on Friday. Yeah, hats off to you guys, यार, you know, इतना विशाल बड़ा विशाल विशाल एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि जब मुंबई की बात आती है, मुंबई वॉरियर्स की, तो मैं सबसे पहले जो नाम आता है आपका आता है। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जहां तक बात हुई प्रोटेस्ट, मुंबई सीबीआई में हो के सामने होके रहेगी। हाँ, मैं लाइव में कह रहा हूँ, कैसे आप समझो, आप मैं आपको इसमें पर्सनली उसमें कर रहा हूँ। होली बहुत ही पास है, ठीक है, होली का त्योहार, और उसके पहले तक कुछ मेरी कमिटमेंट है। अगर उसके पहले चार्जशीट फाइल हो जाता है या कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेटेस्ट अज्यूम ऐसा नहीं होता है, प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर से होम मिनिस्ट्री से प्रेशर, वो क्या कहते हैं, परमिशन मिले, सीबीआई हेडक्वार्टर से परमिशन मिले। आई विल पर्सनली इंश्योर, एंड नॉट ओनली इंश्योर, आई विल बी पर्सनली कमिंग देयर इन द मुंबई। और आप बस नाम याद रखना कि कौन पुलिस वाले आपको वो किए थे परेशान, या अगर ऐसा कुछ भी है, जो भी आप परेशान कर लो या जो भी उठाए थे, आई विल पर्सनली ट्राई टू इंश्योर कि जब वहां पे मैं आऊं और बाकी मुंबई वॉरियर्स जो भी ऑन ग्राउंड रहे, वो पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी हो जब अगला प्रोटेस्ट हो। तो सीबीआई मुंबई के सामने प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अगर उसके पहले चार्जशीट फाइल हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है, प्रोटेस्ट भी होगा और मैं खुद वहां पे होऊंगा सामने। परमिशन ऊपर से डलवाई जाएगी, परमिशन मिलेगी, डोंट वरी। Very reassuring words. Thank you so much, Rudaba. And just Rudaba, want to point out one more thing. You know, when we were there in police station, they were asking us why you want to go there. So we were just saying that we have given all our efforts to try and get answers from CBI. We have written letters. We do tweets every day. We have written HMO and everything. We've followed everything. We have done RTI and everything, but we still haven't got any answers. So obviously, we need CBI to know that we SSRNs need an answer of what's going on in Sushant's case. So what we were being told by the officers over there that the case is with the center in Delhi. So what point you are doing coming in Mumbai and doing a protest? Why don't you all do it over there? So Bharat literally told them कि वहां पे भी किया है और वहां पे भी हम आगे करेंगे. But being in Mumbai also, why can't we do it over here? So they said, literally told us you all are not even allowed to do it and do anything in Mumbai as per the law. ये उनके wordings थे. If you want, you can cross check this with Bharat. These were their words when they told us. Vishal, can I butt in over here? Yes, please. Thanks. It is not because of any law. It is because of the current government over there. The corrupt, what do you call it? Sonia, this Thackeray government and all these people. Do you agree to this or not? Absolutely. I don't think so. Why should they not give us a permission where we are requesting for a silent gathering? Where we are not वहाँ पे Absolutely. कुछ attack नहीं कर रहे हम लोग. Silent gathering के लिए खाली request दिया था हमने. उस पे भी deny. विशाल भाई, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, अब की बार परमिशन सीधा हेडक्वार्टर से आएगी, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, और मैं खुद वहां पे आऊंगा मुंबई। I am in for sure. Whatever day time, I am in for that day. 100% sure. ग्रेट। और जो 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 पुलिस वाले उठाए थे, आई विल पर्सनली ट्राई कि वो पुलिस वाले जो है वहां पे हमारी अब सेफ्टी के लिए खड़े होंगे कि हमको कोई खरोच ना है। तो लेट्स डू इट। Sure. ऑलराइट, Done. I am in द 100% ऑफिशियल sure. हमारी मूवमेंट के ऑफिशियल बाउंसर आज डिक्लेयर हो गए हैं रुद्रा। सो कांग्रेचुलेशंस रुद्रा, एंड कूडोस टू यू मैन, कूडोस। ये जो कुछ लोगों की जो आवाज है ना, जैसे अभी श्री बोल के गई, कल मैं देख रहा था भाई साहब, आप लोग, आप, अमित, दिनेश, वो भावना, ओहो हो, मैं भावना से तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे तो बल्कि अभी फोन करके चेक करना चाहिए कि अब उनकी आवाज इस टाइम निकल भी रही है कि नहीं। इतना चीखे हो आप लोग। अमित की तो अमित ने उस टाइम पे चीखने के बाद जब उनको स्क्रीन पे कुछ पूछ रहे थे, उनकी तभी आवाज नहीं निकल रही थी। सो हैट्स ऑफ गाइस, मैं तो कहता हूं अगर अगर बाउंसर्स ही बनना है ना, तो चलो यार, बाउंसर्स बन के ही सही, इसी तरह से सही। लेट्स जस्ट डू इट, बट लेट्स जस्ट गेट दिस डन यार। बहुत हो गया, कितना सहेंगे। So more power to you, and everybody is appreciating that QR code. I think let's just make it, as our display images and all that stuff. हर जगह वो QR code फैल जाना चाहिए आग की तरह कि लो, जिसको क्वेश्चन है स्कैन करो, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे एविडेंसेस, तुम्हारे मारेंगे हम। So great initiative, and more power to everyone, every single individual.
एक्चुअली मैं बता दूं इसका पावर भी क्या है, जैसे जो कॉमन लोग भी कल हम लोगों को देख देख के आ रहे थे, तो वो भी जब स्कैन करके देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार सीबीआई कुछ कर क्यों नहीं रही, तो बोले वही तो हमारा सवाल है, इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीबीआई आके अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रही। इवन उसको देखने के बाद कॉमन इंसान भी पूछ रहा है कि यार ये तो क्लियर कट दिखाई जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी सस्पिशियन है, तो लेट्स डू इट एंड वी आर टुगेदर। तो इट्स लाइक आप वही यूनिटी जो पहले थी वो आज भी और हमेशा रहेगी व्हेन इट कम्स टू दिस कॉज एंड anything which will lead to a better future. Right. Absolutely. All right, guys. Last, anything anybody wants to say before we end this session? Yeah, thank you to you. This was the most encouraging session in the last few days. Thank you. Thank so you, much. Varun. Thank you. And in fact, thank you everyone. Everybody's Yes, put in their input. Please go ahead, Girijaji. Yeah. As per the charge sheet, from March onwards, that is, this was lawyer Manish Shinde, advocate Manish Shinde has written in his application, RIA versus the union's government. In that, he has written that, one is he has complained that NCB has no right to enter this because the investigation was given only to CBI. The most another important thing that he has written is there were only four others staying with Sushant Singh Rajput from March to June, namely Dipesh Sawant, Samuel Miranda, Neeraj, and Cook Pitani. He has not mentioned there that Ria was staying in the house. Okay. And then the next point, this is in page 7. I have sent this to you, Varun. Page Sure. 7. Point 5. He also mentioned Sushant Singh Rajput's phone was not collected, hence one material link is missing. Okay. So, is the phone with CBI, or I do not know what it is, but this is what this application says. Got it. Yeah. Okay. This is good information. All right. I think we'll go over in the back to basics में एक दो ऐसे सेशन और करते हैं. Versus Union of India, 7th October 2020. Sure. Yeah, I've downloaded it on my machine and I'll go through this as Yeah, well. I've just Thank forwarded it. Yes. Thank you so much. All right. Jate Jate Sonal, you're here, so welcome and please go ahead. Yeah, hi Varun. I think everyone's spoken on the subject. I just have this one burning question that I wanted to ask Rais ji. I asked him in the chat. It's been bothering me for a long time that he was in touch with all of the house help on WhatsApp, like what was going on, and he also knows a lot of things about even other than the farmhouse and all. So I want to ask, was Ria according to them, according to the house help, was Ria Sushant's staff member or was he his girlfriend? And Raisi would know this, right? So I want to hear from him. Yeah, I think specific तो वही आंसर दे सकते हैं, but based on I'll quote a name here. I hope आप सबने भी देखा होगा, एक नोना सुशांत करके एक आईडी है, who has been talking a lot about Sushant. Some of the pictures, some of the content that she's been posting is also very very kind of somehow personal. भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं थी, but she somehow has the right. So I don't know what kind of a thing is between them, between Sushant, and how closely she knew Sushant. But I very clearly remember one time मैंने ऐसे डाला था इससे related कि whether she is girlfriend or not, and she responded. She actually मुझे DM में भी मैसेज आया था कि do not say this because she was not Sushant's girlfriend. ये सब मीडिया का सब कुछ था ड्रामा. शी वॉज देयर टू गेट सम वर्क, और वर्क के लिए सुशांत ने उसको शायद कुछ सीरीज या सीरियल्स जो वो अपने करना चाहता था, बनाना चाहता था, उसके लिए he wanted some kind of a female lead and all. So she was more like I don't know if calling her a staff is also okay, but obviously she was like an employee I की was तरह. gonna call her house help, but I thought I'll give a better name. And because I'm because Raisi is here, and so when I asked him in the chat, he said that मैंने आप लोगों को सब बता दिया है, but मैंने नहीं सुना है. So it would be really nice if he can share because he knows. Sure. Yeah. See, Ria herself in April 20th in an interview, she said she's just a friend.
Yeah. We've seen all of this. We've heard from everyone, but I really want to hear this from Raees ji. It would be really nice to throw some light on this. चलो रईस जी, वो जो मैंने बोला उसको कंफर्म करते हुए बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला है. So I think what he's trying to say is yes, she was definitely not the girlfriend. Oh, so this is from the other house help. They probably were 24/7 with Sushant, so they already know. So then it's proven, right? Correct. Hmm. Absolutely. Okay. Thank you for All right. clarifying. Thank you everyone. और जाते जाते, before I end, let me just play this because this was, I think, one of the most highlight of, or the most sweet moment of that particular event. Thanks to Amit. बहुत जल्दी अभी अब तो क्योंकि वो इंडिया में आ गए, so time का difference का issue कम होगा. But I just want to play this, so let's see this. So great effort by all the warriors, and hats off and kudos to Amit for doing this. CBI up to jawab do is how I'd love to end this. Justice for Sushant Singh, justice for Jia, justice for Disha, and let's keep on doing that till we all get justice. Thank you so much, everyone. Good night. One last thing, Varunji. Sure. Bombay, it's anybody who's listening to this, please come on the roads, do something over there. Thanks, Varun. Great. All right. Thank you, everyone. Take care. Good night, and have a blessed day. Bye-bye.